Very good evening, all of you. I hope team टिके confirm करो my voice is clear or not. I hope I'm loud and clear. I hope team टिके confirm करो. Okay. Uh, very good evening to all of you. Jolly समस्त everybody, please join quickly. We are going to start the discussion related to UPSC Civil Service Examination. Okay. I hope those who have given the paper, how was the question paper? All right. Okay, okay, great. So, students, the questions were, I would say, in comparison to um, the previous examination, it was a bit of moderate to difficult level, but that also depends because this time there are some of the questions, especially from economy, they have asked to find out the calculation, and there are also certain questions. There are three statements basically. Generally UPSC asks two level of statements. This time they have asked three level of statements, so perhaps that is also one of the reason, to make question paper a bit of uh, time consuming and complicated. And I think every year UPSC is making the question paper a little tougher compared to the previous examination. Anyways, so along with me, students though and viewers, those who are watching live today, I'm also watching all of your comment. Please share this particular class to, I would say, to your friend circles, right? And with me, uh, Kanha Jha sir and Prabhakar Jha sir will be joining very soon. I'm going to take off the polity and economy portion. Once my portion is completed, then Kanhej Jha sir will be taking your geography portion, environment portion, and etc. And once that is completed, Prabhakar sir will continue with the history and science and technology and remaining current affairs portions. So without further any delay, students, let us start immediately related to today's class. The UPSC CSE Prelims 2025. I am discussing the set D questions and answers. Okay. So those who have different sets A, B, C, please kindly correlate the question paper. We have tried our level best to find out the each and correct answer accordingly. The first portion which we are going to discuss is polity and governance. Let us understand first question. The first question related to polity and governance, it is asking about, consider the following statements with regard to pardoning power of the President of India. All right, all of you know that under the different types of power of the President of India, it is the question is related to the pardoning power of the President of India. So since the question is asking, let us understand the statements. So what we have to do, we have to find out
the correct answer. Let us read the statements. First statement, the exercise of this power by the president can be subject to the limited judicial review. Exercise of this particular power can be subjected to the judicial review. Okay. Now, at the same time, the president can exercise this power without the advice of the central government. So, students, the first statement is correct. Okay, the exercise of this power by the president be subject to the limited judicial review. Yes, it is correct. So many a times Supreme Court has given in multiple judgments that the power of the pardoning is subject to the judicial review, but it is limited. So statement 1 is correct. Okay, so if the statement 1 is correct, cannot be the answer. D also cannot be the answer. Now the president can exercise this power without the advice of the central government. Is it correct? No. So students, this statement is itself is not correct, because if you see article 74 clause number 1, if you look at the article 74 clause number 1, it categorically says that the president will be having the council of minister headed by the prime minister to aid and advise, advise to aid and advise. So if we look into this particular context, you have to understand the president cannot exercise this power without the advice of the central government. So this statement is wrong. So what is the correct answer? Correct answer is A, that is 1 only. Okay, A, that is 1 only. I hope this is clear to all of you. Now next question, let us understand. This question is statement based question. Okay, this question is statement based question. I'm also looking at your comments. I hope you people also please comment in this particular video, so that we will be going simultaneously. Now students, the question number 27, question number 26 is completed. Now question number 27. Question number 27 is consider the following statements. So what are the statements? Let us understand. Before that, we have to find out, it is asking us to find out the correct answer. On the dissolution of the House of the People, the speaker shall not vacate his or her office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution. Okay, the dissolution of the on the dissolution of the House of the People, the speaker shall not vacate his or her office. Okay, so it is constitutionally mandated also in the practice, because unless and until a new speaker is being appointed, till now the existing speaker cannot vacate the office. So he or she shall continue till a new speaker is being elected. So from that point of view, this statement is correct statement. Now, according to the provisions of the Constitution in India, a member of the House of the People on being elected as speaker shall resign from his or her political party immediately. Students, you know, political questions are such a beautiful questions they have asked this time, and these many of the questions are from the core concepts also. So if you happen to read these core concepts, I'm sure that you might have answered these particular questions. Now, this question is basically referring to the differences of the power of the the speaker from India, power of the speaker from India and UK. So if we compare between these two, India versus UK, in this statement would be correct if it is referring to the UK speaker, because in UK or the Britain, what happens, the speaker has to resign, but in India there is no such provision related to resignation of the speaker if that particular member becomes a speaker. Please try to understand. Let me repeat once again. If a member of the parliament becomes the speaker, then the person need not to resign in India, but the person has to resign in UK. So from that point of view, statement number 2 will be wrong. So if statement number 2 will be wrong, then definitely this cannot be the answer, this cannot be the answer, and this cannot be the answer. So right answer is C, 1 and 3 only. So by using the elimination technique, we are getting the particular answer as C. Okay, now let's go to question number D. Let's go to question number D. The question is saying, students,
consider the following statements. If any questions arises as to whether a member of the House of the People has become subject to the disqualification under 10th schedule, the President's decision in the accordance with the opinion of the Council of Ministers shall be final. What the question is saying, if any question arises to whether a member of the House of the People, okay, that means simply it's too elongated, that means it is simply saying if an MP has become subject to the disqualification 10th schedule, the President's decision in accordance with the opinion of the Council of Union shall be final. No, in terms of the 10th schedule, the President is not primarily involved, especially when you talk about the member of parliament. Here the role of the speaker comes in. So the statement number 1 would be wrong statement, because it is asking us to find out the correct. So statement number 1 is the wrong statement. There is no mention of the word political party. There is no mention of the word political party in the Constitution of India. No, this is also wrong. There is no mention. This is wrong, because the political party, it is mentioned in the 10th schedule of the Constitution. So 10th schedule itself is a part of the Constitution. So that means this statement number 2 is also wrong statement. So answer would be D. Okay, answer would be D. Now let's go to next questions. Do not worry, all of these particular answers I am going to give all these answers to the particular Ray Academy Telegram group. You can download this particular answer. Now question number set D29, question 29. Please read the question. Consider the following statements. Let's understand. So before we go for the each and every questions, it is asking us to find out the correct answer. Let's understand. So this is a statement, typical statement based question. Statement number 1, in India, state government have no power for making rules for grant of concession in respect of extradition of minor minerals, even though such minerals are located in the territory. Even though such minerals are located in the territory. No, this is wrong. If you take the example of Odisha itself, yes, the state government has power to make rules in relation to the extraction of the minor minerals. Okay, so this statement is a wrong statement. So if the statement 1 is wrong, that means C cannot be the answer, as well as A cannot be the answer, and B cannot be the answer. Did you get my point? So easily, by using a common sense, also by using elimination technique, we reach to the conclusion answer number D is the correct answer. But if you read the statement number 2, in India, the central government has the power to notify minor minerals under the relevant law. Yes, central government has power, but at the same time, state government also has power to issue certain concessions in respect to the extradition of the minor minerals. So what we understand is correct. Is it clear to all of you? Please answer in the comment section, all of you. Answer in the comment section. Okay, next question, let us go. All right, next question. Question number 31. With reference to the Indian polity, consider the following statements. Let's understand what are the statements, and we have to find out which is correct. An ordinance can amend any central act. An ordinance can abridge a fundamental right. And an ordinance, okay, an ordinance can come into effect from a backdate. Let us understand. Okay, all of you know the president's power related to ordinance. All of you know the president's power related to ordinance. Under Article 123 of the Indian Constitution, the president can issue ordinance. The president can issue ordinance when parliament is not in session. That is the condition. Parliament is not in session. Not in session. So students, ordinance is nothing but a typical law like a parliament. But here the parliament is not enacting the law. Here the president is enacting the law. Why? Because parliament is not in session. All of us, we know that in a year there are 3 sessions.
and in between those sessions there are certain gaps. So within that gaps, if there is any emergency or if there is a requirement to enact a law for some condition or for some situation, then the president has the power. So that is called as ordinance under Article 123 of the Indian Constitution. So now an ordinance can amend any central act. Yes, it is correct. An ordinance can abridge the fundamental right. No, it's a very simple thing. A law cannot abridge the fundamental right. Especially when you look into the context, yes, fundamental rights can be amended by certain constitutional amendment act, but not all the fundamental rights. For example, fundamental right article 14, article 21, these are basically, they are also part of the basic structure, cannot be amended at any cost. So since the statement is saying all the fundamental rights, means statement number 2 will be wrong. So if statement number 2 will be wrong, then this A cannot be the answer, B cannot be the answer, D cannot be the answer. So right answer is C. Okay, all of you, is it clear to all of you? Right answer is C. Okay. Now let us understand another question. Okay, so this question is a typical table questions. Let's understand. The question is saying it is not purely polity but also linked, I would say. There is just it has given certain name, state, and there is description. Now it is saying that Arunachal Pradesh, the capital is a name after a fort, and the state has two national parks. Okay, and the state has two national parks. Now Nagaland as a state, the state came into existence on the basis of a constitutional amendment act. Now if you go to the Tripura, initially a part C, state is become a centrally administered territory with reorganization of the state 1956 and later attained the status of full-fledged state. Okay, students, if you look at the Arunachal Pradesh, okay, what is the capital? Capital is Itanagar. The capital is Itanagar, and Itanagar indeed is named after a fort. Yes, this is a correct statement. All right. So statement number 1 is correct. Since the question is asking about how many of these statements are correct, not which one, so we have to go through each and every statement. Now Nagaland, as it is saying that Nagaland is, the state came into existence on the basis of Constitutional Amendment Act. No, this is wrong. Okay, this is a wrong statement. Then third is Tripura, initially part C, state, it became a centrally administered territory with the reorganization. This is also correct statement. So how many are correct? Only 2. B is the right answer, students. B is the right answer. And especially when you talk about the Arunachal Pradesh, there is also another statement related to 2 national parks. So the 2 national parks are Mauling and Namdapa. So these are the 2 national parks associated with Arunachal Pradesh. All right. So Tripura, it was a part of C, became union territory in 1956 and full state in 1972. So this is the actual explanation related to the particular question. Okay, all of you please comment. Please comment your answer. Let's understand. With reference to India, consider the followings. But let us go directly to the statement what they are asking. How many? How many means we have to find out each and everything whether they are aligned or not. Now how many with reference to India, consider the following: the Interstate Council, the National Security Council, and the Zonal Council. How many of the above established as per the provision of the Constitution of India? Now this is basically telling you, or this is basically asking you whether they are constitutional bodies. Constitutional bodies. Look at this question. This question is little bit tricked, but I am sure that the students who have gone through the different types of constitutional bodies, I am sure that they will be able to at least answer this. Okay, and all of you know that the Interstate Council under Article 263 of the Indian Constitution, it is categorically mentioned in our Constitution related to the Interstate Council. So this one is correct. The National Security Council is not mentioned in the Constitution. Zonal councils are also, they were established by State Reorganization Act. Zonal councils are established by State Reorganization Act of 1956. So this is not mentioned in the Constitution. This is not mentioned. This is not mentioned. Only statement number 1 is mentioned. So answer would be only 1. Okay, how many it is asking? So it will be only 1.
Is it understood? Yes. Next question, students. 34 questions. 34 is saying, consider the following statements. The Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the governor of a state acts in or her own discretion. Okay. So it is basically asking that is it correct? Is there any provision in the constitution which gives power to the president of power to the governor of a state to act discretionary, means to act on his own without taking the aid and advice of the chief minister and council minister? Basically this is the context. In my classes also many times I have told you, students, many times I have told you, especially if you go through article 163 clause number 1 of the Indian constitution, the governor has power, especially for the 5th and 6th schedule, without referring to the council of minister, the governor can exercise. So this statement 1 is correct. This statement 1 is correct. That means if it is correct, let's understand statement number 2. So statement number 2 is the president of India can on his or own reserve a bill passed by a state legislature for his or her consideration without it being forwarded by the governor of the state concerned. It means very basic things, I would say. You know, if you happen to read the Indian polity properly, if your concepts are very clear, but I'm sure that 110% sure you will be able to answer this type of questions. It is simply saying that in a state what happens, the legislative assembly passes a bill. Now the bill goes to governor. The bill goes to governor for his final approval. Okay, but governor has certain discretionary power. Governor has certain veto power. One of the having so many veto power, like it can reject, it can hold, but governor has also another power that it can preserve the bill or it can send the bill to the president. Means a state bill can be forwarded to the president. So this statement is basically saying, can the president get this particular bill without governor? So this statement is wrong. Okay, that means A is the right answer. Are you understanding, all of you? All of you are understanding this particular question? Yes, A is the right answer. A is the right answer. Now let's go question number 35. So again it has a tabular format. Now this question is asking about how many. That means we have to go through each and every questions. Yes, any questions in your comment section, please ask. Okay. 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 Now provision of the Indian Constitution, and here the stated under separation of judiciary from the executive in the public service of the state. Separation of judiciary, this provision is mentioned under which part of the constitution? The directive principle of state policies. Yes, my dear students, this is related to article 50 of the Indian constitution, separate of executive and judiciary, mentioned under DPSP. Okay, mentioned under DPSP, part 4 of the Indian constitution, part 4 of the Indian constitution. Now valuing and preserving the rich heritage of our composite culture, this is nothing but, students, fundamental duty under article 51 A subclause F. Okay, this is related to fundamental duty. Yes, this fundamental duty under part 4A, this is also matching, this is matching, this is also matching. Now at the same time, the prohibition of employment under below the age of 14 years factories, so this has already been mentioned under article 24 of the Indian constitution. And fundamental rights means part 3 of the Indian constitution. So all threes are matching with each other. So how many are correct, how many pairs are correct? All the 3 pairs are correct. That means C is the correct answer. Okay, easy, all of you? Yes, yes. Easy or difficult? Easy. Chalo, next question. D. Consider the following statements with reference to the Constitution of India. If an area in a state is declared as a schedule area under 5th schedule. Okay, I think few days before only I was discussing about the 5th schedule.
It is saying that if any particular area is declared as a area under the fifth schedule, we have to find out the correct answer. Let's see. So the state government loses its executive power in such area, and the local body assumes total administrations. And the local body assumes total administration means it is saying that if a particular area, fifth schedule means primarily the areas which are tribally dominated, and to protect the heritage, culture and values and ethos of the particular area, so generally the president will notify this particular fifth schedule. Under the fifth schedule, if it happens to come under the fifth schedule, then it is saying, the statement saying, the state government loses its executive power. No, even in many of your states, definitely there will be certain areas which are under fifth schedule. The state government do not lose any of the executive power. No, this is basically wrong statement. Okay, if statement number 1 is wrong, if statement number 1 is wrong, then C and A cannot be the answer. Now, next statement is the union government can take over the total administration of such area under certain circumstances on the recommendation of the governor. No, this is also not correct. Union government cannot take the entire administration. That will be a violation of the federal character of our constitution. So statement number 1 wrong, statement 2 is also wrong. So right answer is D, neither 1 nor 2. Neither 1 nor 2 is the correct answer. Okay, now next question, let's go. With reference to India, consider the followings. Now there is an organization, there are certain ministries, and it is saying that how many of the above pairs are correctly matched. Let's understand how many of the above pairs are correctly matched. It is saying the National Automotive Board. The National Automotive Board is under Ministry of Commerce and Industry. No, this is not. This is basically confusing. This is not under Commerce and Industry. This is under Ministry of Heavy Industry. Heavy Industry. Okay. So this is wrong. The Choir Board. Okay. Yes. Yes. In comment, please answer. The Choir Board is related to what? It is related to not heavy industry. National Board is related to heavy industries. The Choir Board is related to MSME students. The Choir Board is related to MSME students. And the National Center for Trade Information is related to the Ministry of Commerce and Industry. So all these things, all the pairs are not matching with each other. So answer would be D. It is saying that how many of the above pairs are correctly matched. So answer would be D. If it is saying how many of the above pairs are incorrectly matched, then the answer will be 3, because all threes are not matching with each other. All right. So this is the answer. Let's understand. Let's go to another question, students. Yes, any question? Please ask in the comment section. Any questions? Now let us go. Consider the following subjects under the Constitution of India. Now let's understand. It is saying list 1, union list, is in the 7th schedule of the Indian Constitution. Okay. Extent of the executive power of the state, condition of the governors of the office. For a constitutional amendment with respect to which of the above ratification by the legislature of not less than 1/2 of the state is required before the presenting bill to the President of India for assent. Students, let me make it very simple for you. This question is related to the amending especially the majority or types of majority. Okay, so under the types of majority, that means if a resolution or a bill, by what percentage the bill can be passed or the resolution can be passed. There are many different types of majority. One is simple majority, one is absolute majority, another one is effective majority. Okay, another one is special majority. Under the special majority, there are 3 types: type 1, type 2 and type 3. So generally it is asking about the type 3 special majority. Normally what happens in the type 3 special majority, not less than 2/3 of present and voting plus 50% of the states. Remember, example GST. When the goods and services tax was implemented in our country,
the parliament has passed the bill, but in order to get it enforced, 50% of the states, 50% of the states means the number of states in India, out of which 50% of the states, they have to pass the bill in their own legislative assembly by 50% of simple majority. So this is special majority type 3. This is special majority type 3. Okay, that means this is simply saying this majority is used in where. This majority is used in where. Let us understand. So students, list 1 union list in the 7th schedule, yes, if you amend, definitely it is required. Extent of the executive power of a state, yes, this is also required. States ratification of 50% majority is required. Condition of the governor's office, no, because whatever is the conditions of the governor's office, it is decided by the directly president, not by the parliament directly. Okay, so statement number 1 and statement number 2 are correct. So since this is asking us the correct answer, A is the right answer. A is the right answer. All right, next question, let's go. Question number 39. With reference to the Indian polity, consider the following statements. Okay, now directly let us go. It is asking us to find out the correct answer. Find out the correct answer. Now, the governor of a state is not answerable to any court for the exercise of the and performance of the powers and the duties of his or her office. Students, just recently this question is also relevant to the current affairs. Recently, the judiciary has made certain comments related to the power of the governor, and at the same time, now I think previous week only the president of India invoking under article 43, article 143, the advisory jurisdiction, it has asked the same thing from the judiciary. So for the time being, yes, this statement is correct statement. No criminal proceedings shall be instituted or continued against the governor during his or her term of office. Yes, this is also correct. It is not only the governor but also applicable to the president of India. Members of the state legislature are not liable. Members of the state legislatures are not liable to any proceedings in any court in respect of anything said within the house. Yes, if they have said something in the house, that is what we say. If within the parliament or within the state legislative assembly, one particular member, MP or MLA, if they have said something, then it is considered as absolute freedom of speech and expression. So they are not liable in court, but they might be liable within the house proceedings. If the house brings certain resolutions to basically condemn the statement, they can, but it is not liable under the any court. That means all three statements are correct. D is the right answer. All right, D is the right answer. Now let's go next question. 41. Under the 41, the panchayats, the intermediary level exists in all states. Panchayats, the intermediary level exists in all states. To be, yes, panchayats in the intermediary level exist in all states. No, my dear, this is not all states. This is not all states. Why? Because if you look at the condition specifically says that under article 243B of the Indian Constitution, it says that, okay, a state which does not have population of 20 lakhs shall not have intermediaries. Generally under the panchayat we have three mediums: level 1, level 2 and level 3 is the district level. Okay, but the mediary, the block level is not available if a state does not have the population exceeding not exceeding 20 lakhs under article 243B. Statement number 2 is saying, to be eligible to be a member of the panchayat at intermediate level, a person should attain the age of 30 years. No, this is also not correct. There is no such formula related to 30 years. The minimum age it is mentioned is 21 years only. So this statement is also wrong statement. The chief minister of a state constitutes a commission to review the financial position of the panchayat. No, not the chief minister. Chief minister does not constitute. It is the governor who constitutes. Okay, under article 243, it is the governor who constitutes. So students, all the three statements are wrong statement. This is wrong, this is wrong. So which of the statements given above are not correct? Above are not correct. So all the three statements are not correct. So answer would be D.
Is it understood? Answer would be D. No, my dear, not A, it will be D. It will be D. Next question. Question number 48. The power of the Lokpal. See, in the UPSC there are many years no question on Lokpal, but this time they have asked. Consider the following statements about Lokpal. Now it is saying that the power of the Lokpal applies to public servants. The power of the Lokpal applies to public servants of India, but not to the Indian public servant posted outside India. This is wrong. Okay, this is wrong. The power of the Lokpal applies to the public servant in India, also any public servant or any public servant who are posted outside of the India. This is wrong statement. The chairperson of a member, the chairperson of a member shall not be a member of the parliament or the member of state legislatures of this I think this is wrong. Okay, this is 3. This is 3. Maybe this is 4. Okay, little bit of typing mistake. This is 4. So the chairperson shall not be a member. Okay, anyways, let us do something. When the statement number 1 is wrong, then C cannot be the answer, and also okay, C cannot be the answer. The chairperson or a member shall not be a member of the parliament. Yes, chairperson cannot be a member of the parliament or the member of state legislature or any territory. And only the Chief Justice of India, whether incumbent or retired, has to be chairperson. Yes, this is the provision mentioned under the I would say it is saying that only Chief Justice. No, this is wrong. This is wrong. Okay. Now, if you look at the explanation, students, the chairperson of the Lokpal must be a current or former Chief Justice. Former Supreme Court judge also can become a chairperson under section 3 clause number 2. Since the statement saying only Chief Justice, it is not correct. This statement is also correct. So statement number B also cannot be the answer. Now statement number 3, the chairperson or a member shall not be a person or less than 45 years of the age on the date of assuming office as the chairperson or the member, as the case may be. Okay, yes, this statement is correct. Cannot be less than 45 years. Cannot be less than 45 years. Lokpal cannot inquiry into allegations of the corruption against the sitting prime ministers. No, Lokpal can inquiry into the sitting prime minister. So this statement is also wrong. Only correct answer is A. Only correct answer is A. A is the right answer. Now, next question. Question number 53. Now, here, I think while beginning the today's class, I was telling you a couple of points that this time they have complicated by adding certain, 3 level of informations. So this is one such example. What they have done, they have, in one side there is organization, in another side some of the functions of that organization, and another side this organization comes under which ministry. So basically your brain has to function in a permutation combination at all the 3 levels. If this is connected, then is this connected? That means at 3 level of information that you have to process. And to add cherry on the cake, to make it more difficult, they have asked you how many of the above statements. They have asked you how many of the above statements. Let's understand. Directorate of Enforcement. Directorate of Enforcement. Enforcement of the Fugitive Economic Offence Act 2018. Correct. Internal, it works under Internal Security Division under Ministry of Home Affairs. No. Enforcement Directorate doesn't work under Ministry of Home Affairs. It works under Ministry of Finance. Remember, it works under Ministry of Finance, Revenue. So this is the department under which it works. This is the department under which it is working. Okay. Department of Revenue, Ministry of Finance, under which Director of Enforcement works. So this statement is wrong. Now this match is completely wrong. Directorate of Revenue Intelligence Enforcement, the provisions under Custom Act, yes. And this also works under, yes, this is correct. Directorate of General of the System and Data Management, carrying out big data analysis and assess tax offices, yes, correct. This also comes under Department of Revenue, Ministry and Finance, yes. So see,
although they have given you 3 level of information, so if you apply a little common sense also, then also you will be easily able to identify which one is correct or which one is wrong. So this is correct, this is correct. So how many are matching? Only 2. B is the correct answer. Yes, is it clear to all of you? B is the correct answer. So students, these all questions are related to what? Related to I would say your polity. Now let us come to certain few questions related to international relations. Now while discussing about the questions on international relations, although as I said that international relations certain questions are also might be synced with the current affairs. So few static questions now I am going to discuss. The first question, question number 42, it is saying consider the following statements with respect to BIMSTEC. Okay, with respect to the BIMSTEC. Now, this is saying it is a regional organization considering 7 member state till January 2025. Till January 2025. Correct. This is a correct statement. So, if one is correct, let's come to next. It came into existence. It came into existence with the signing of the Dhaka Declaration 1999. No, my dear. See, the statement number 2 is incorrect. Why? Because it is not under Dhaka Declaration. It is under Bangkok Declaration 1997. Under Bangkok Declaration 1997. Now statement number 3, the founding members of the BIMSTEC, okay, were Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand 1997. Nepal and Bhutan, they joined later in the 2004. So Nepal is not the founding member. But if you look at the statement, it has said that Nepal is the founding member. No, this statement is also wrong statement. And if you look at the statement number, if you look at the statement number 4, India leads the tourism subsector. Okay, it is saying in BIMSTEC the subsector tourism is being led by India. Correct. India itself has proposed that. India itself has proposed that. So I would say statement number 2 is wrong. Statement number 3 is wrong. 1 correct, 4 correct. So answer would be C is the right answer. C is the right answer. Next question, students. Question number 47. Question number 47 says that consider the following statements with regard to BRICS. Okay, BRICS. It is saying 16th BRICS summit was held under chairmanship of Russia in Kazan. Chairmanship of Russia in Kazan. Yes, this is correct. This BRICS summit was conducted around October, I would say around October 2024. Correct. Indonesia has become a full member of BRICS. Indonesia has become a full member of BRICS. No, this is wrong. Okay, this is wrong. And the theme of the 16th BRICS summit was strengthening multicultural for just global development and security. Now it has played with the word. This word is wrong. It is not multiculturalism. It is multilateralism. Okay, multilateralism. Lateral. Okay. So this is the right answer. 16th BRICS summit was strengthening not multiculturalism, it is multilateralism. So this statement is also wrong. This statement is also wrong. So what is the right answer? D, 1 only. 1 only is the right answer. All of you are with me? Everyone? Question number 61. Consider the following countries. Okay. Australia, Bulgaria, Croatia, Serbia, Sweden, North Macedonia. How many of the above members are part of the NATO, North Atlantic Treaty Organization, NATO? Okay, students, this is in current news. NATO is in current news. So Austria, no, this is not under NATO. Bulgaria, yes. Croatia, yes. Serbia, no. Sweden, yes. And North Macedonia, yes. So the final answer will be B. Only 4 is the final answer. So students, these are all questions related to your, I would say, international relations. Now let us come to your economy related questions. This time, economic related questions, little bit jingle. I will tell you why, and I will show you also why. The first question related to the economy, question number 11, set D. So this is the calculation. You can say that the CSAT question they have asked in the economy part. There are 2 questions based on the calculations. Suppose the revenue expenditure. Okay, yes, any question?
Okay, okay. So basically, it has given you certain figures. It is saying the revenue expenditure is 80,000 crores. Revenue receipt is 60,000 crores. Expenditure is 80 and receipt is 60,000 crores. The government budget also shows borrowing of 10,000 crores and interest payment of 6,000 crores. Which of the following statements are correct? Do not be bumbled by big numbers. Simply use your basic formula. Okay, it is saying simply use your basic formula. What is the basic formula? Revenue deficit is equals to revenue expenditure minus revenue receipt. Okay, revenue deficit is equals to revenue expenditure minus revenue receipt. If you use the formula 20,000 crores of rupees, so revenue deficit is 20,000 crores. Statement number 1 is correct. Fiscal deficit, since the borrowing is being given 10,000, because fiscal deficit is borrowing is being given 10,000 crores, then this is also correct. Then it is asking the primary deficit. Okay, the primary deficit is fiscal deficit minus interest payments. The primary deficit is fiscal deficit minus interest payment. So the answer is 4,000 crores. D is the right answer. All three are not 4 crores, 4,000 crores. All three options or C statements are correct. So this is a little bit jingle, but if you simply apply the basic formula of Indian economy, you'll be able to easily answer this particular question. Now, next question is 15. A country's fiscal deficit stands at 50,000 crores. Okay, again, calculus based question, but apply the formula. It is receiving 10,000 crores through non-debt creating capital receipts. The country's interest liabilities are 1,500 crores. What is the gross primary deficit? Okay, simply use the formula. If you know the equation, what is the equation? Equation says gross primary deficit is fiscal deficit minus interest payment. Very simple. If you look at the question paper for the first time, it might jumble your brain. But frankly speaking, if you know the particular, the equation, easily you can answer this. So the gross primary deficit is equals to fiscal deficit minus interest payment. So fiscal deficit is given 50,000 rupees. Interest liability, which is nothing but interest payment, is given 1,500 crores of rupees. And non-debt creating capital receipts, they are already accounted in the calculation of fiscal deficit. So basically, this non-debt creating capital receipts has nothing to do. This is actually an extra information and not required. So what is the right answer? A, 48,500. 50,000 minus 1,500 crores is 48,500 crores is the right answer. To make you confusing, it has given the non-debt creating capital receipt, so which is not required at all. Okay. Now students, I hope this is what we have understood. Next, question number 16. Which of the following statements with regard to recommendation of the 15th Finance Commission of India are correct? Recommendation of 15th Finance Commission, and it is saying select the correct answer. Okay, it is saying select the correct answer. It has recommended the grant of 4,800 crores from the year 2022-23 to the year 2025-26 for incentivizing state to enhancing education outcomes. See, UPSC in the year 2025, they are asking questions referencing to the 2022 and 23. So sometimes this type of questions also may come. Anyways, let's go to the question. So the statement simply says the Finance Commission has recommended approximately 4,800 crores of rupees to incentivize states government for the educational purpose. So this is a correct statement. 45% of the net proceeds of the union taxes are to be shared with states. No, Finance Commission has not given any kind of recommendation. So statement number 1 is correct, but statement number 2 is not correct. Statement number 2 is not correct. If it is not correct, D cannot be the answer, A cannot be the answer, B cannot be the answer. Answer is C. Okay, answer is C. It cannot be the answer. Let's go next. Next is question number 17. Consider the following statements related to, yes, any question please ask. Consider the following statements in respect of the International Bank for Reconstruction and Development, IBRD. Anyways, let us understand more about it. IBRD. Okay, IBRD. It provides loans and guarantees to middle income countries. Yes, IBRD provides loans
and guarantees to the middle income countries. So by that statement, B cannot be the answer. By that statement, B cannot be the answer. It works single-handedly to help developing countries to reduce poverty. No, to reduce, not single. If you apply common sense simply, you will be able to identify whether the statement is wrong or correct. It works single-handedly to help developing countries in reduce poverty. Is it true? Because to reducing poverty, there are many institutions who are working. WHO is working, European Union is working, United Nations is working. So many institutions are working. So by applying common sense itself, you will be able to find out statement number 2 is wrong statement. So if statement number 2 is wrong, so A cannot be the answer, C cannot be the answer, D cannot be the not C, because C doesn't contain the 2. So B cannot be the answer, D cannot be the answer. Okay, if you do not read the statement number 1 also, if you happens to read only statement number 2, you will be able to easily find out the C is the right answer by using elimination technique. Next question, question number 18. Okay, economics questions are, yes. Question number 18. Question number 18 says that in RTGS the settlement time is instantaneous, while in case of NEFT it takes some time to settle. It's a basic common sense. Yes, it is true. RTGS it is instant, but if it is NEFT takes some time. All of you know that if you do the NEFT, it may some 2 hours 3 hours time depending on the banks to banks. So this statement number 1 is correct statement. So this is basically asking us correct statement. Okay, statement number 1 is correct statement. Now in RTGS the customer is charged for inward transactions, while that is not that in case for NEFT. No, this is wrong statement. It is not charged. In RTGS it is not charged. Operating hours of RTGS are restricted on certain days, while this is not true for NEFT. No, this statement is also wrong statement, not restricted. So A is the right answer. A is the right answer. Next question, question number 19. Okay, recently this is also under the news. Yes, this is also under the news. The news is related to the UPI. All of you know that UPI has gone global. Now by a huge amount of success in India, many of the foreign countries also have adopted the UPI transactions. So this is basically asking the which of the above countries have adopted UPI. How many of the above countries have adopted UPI? So students, United Arab Emirates, yes. UAE, recently Honorable Prime Minister visited, UPI is accepted. France, yes, UPI is working. Germany, no. Singapore, working. Bangladesh, no. Okay, so how many are correct? Only 3 are correct. Only 3 are correct. So right answer would be B. B is the right answer. UPI is working under, or UPI is working in only 3 countries, including India is extra. Now question number 51. With reference to investment, this is a typical question related to investment. This is saying there are 4 statements: bonds, hedge fund, stock, venture capital. How many of the above are treated as alternative investment funds? How many of the above are treated as alternative investment fund? Now students, if you look at the bonds are generally generally they are traditional investment. They are generally traditional investment funds. Okay. Now if you look at the hedge fund is considered as alternative investment fund. If you look at the stocks are also traditional investment, but if you look at the venture capital, they are alternative investment. So how many are correct? Only 2 are correct. So answer would be B is the right answer. Okay, now let's go. Next question is 52. Which of the following are sources of income for Reserve Bank of India? So it is basically asking you, this question is related to your monetary policy and RBI. Monetary policy and RBI. Okay, monetary policy and RBI. Which of the following are the sources of income for Reserve Bank of India? That means the question is asking, from where do RBI generates revenue for itself? Let us read the questions one by one. Buying and selling government bonds. Okay, buying and selling government bonds. Yes,
By buying selling government bonds, it loses. But yes, if RBI buys the government bonds, that means it has to pay somebody. But if when the RBI sells government bonds in order to control the inflation, then you can say that it generates revenue. So statement number one is correct. Buying and selling foreign currency. Buying and selling foreign currency. Yes, during buy and selling foreign currency, this is also true. When RBI sells foreign currency, then what happens? RBI generates a revenue. Correct. Statement number two is correct. Pension fund management. See, RBI actually it manages its own employees pension fund, but it is not concerned with the entire ecosystems or entire government's pension fund. So this statement is wrong. Statement number three is wrong. This cannot be the answer. This cannot be the answer. So let us know, lending to private companies. If RBI is lending, first of all, RBI cannot directly lend to the private companies. Okay, RBI is lenders of last resort. Lenders of last resort. Remember. So RBI doesn't lend directly to private companies. RBI lend to banks. Then banks lend to private companies. So this statement is also not correct. Printing and distribution of currency. No, 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 no. This cannot be the source of revenue. So this is also not correct. Right answer is A. Okay, 1 and 2 only. So these are the only two sources by which RBI generates revenue. Next question, students. Yes, did you understand, all of you? Did you understand? Yes. Okay, next question. Question number 54. Question number 54. Okay. Consider the following statements. The Reserve Bank of India mandates all listed companies in India to submit a business responsibility and sustainable report. That means RBI has mandated that any listed companies means any companies which are listed under stock exchange, they have to provide business responsibility and sustainable report. Business responsibility and sustainable report. My dear students, this statement is wrong. Why? Because the apply common sense. How? If a company is listed companies and it is the statement is somehow linked to a question or linked to a particular entity, so it cannot be RBI. It cannot be RBI. RBI has nothing to do with listing of the companies. It is SEBI. It is SEBI. Okay, Security and Exchange Board of India. Security and Exchange Board of Security and Exchange Board of India. Is it clear to all of you? Alright. So by this statement, SEBI has mandated. If you look at the mandates, the listed company, yes, this is true, but not by RBI. It is by SEBI. So statement one is wrong statement. So it is asking us, so which one is correct? Correct means one is not, it cannot be the answer. C also cannot be the answer. In India, a company submitted a BRSR, that means business responsibility and sustainability report, makes disclosure in the report that the largely non-financial in nature. Yes, this is true. This is true. In India, a company submitting BRSR makes disclosure in the report that are largely non-financial in nature. So any transactions or any entities which are basically non-transactional or sorry non
financial. What do you mean by non-financial? If the company has made certain transactions or certain entities which are related to the environmental development, which are related to the social development, which are related to the governance related development, then these are called as non-financial transactions. So by this clause, statement number B is the only correct answer. I hope this is clear. Okay, let us come to next question. 57. Now this time look at this question. If you look at the question, question number 57, basically in the beginning of my class I have told UPSC this time has made some of the questions bit of complicated by increasing the level, in the sense three statements. Generally what happens, two statements, but now three statements. Earlier also we have seen three statements, but this time there are also many of the questions are three level of statements. In fact the tables are also three level of tables. So if you look at the particular statement, statement number 1, okay, it is saying as regard returns from an investment in a company. Statement number 1, please read the particular statement carefully. As regards returns from an investment in a company, generally bondholders are considered to be relatively at lower risk than the stockholders. Students, if you happen to read the chapter called as financial market in your economy, this question you can easily answer. Although it may look complicated, but it is not that much. Okay. Normally what happens in the financial market, there are two types of things. One is bond market, another one is share market, or which you popularly call as stock market. Okay. Now bond means what and share or stock means what? In in share or stock, what happens? You purchase or you buy certain shares, and that much of percentage of ownership also you have of the company. Let's say you have bought 4% of ownership of the share. Here what happens in the bond, that is not the case. Okay, in the bond basically you get interest. The students, since the stocks are high, I would say the stocks are high risky, means the bonds are less risky. So bond holders, they get less return compared to the stock. It's a very basic concept. Where there is high return, there is high risk. In stock or share, there is high return compared to bond, so there is high risk. But in bond, it is less riskier because you get the interest payment. At the same time, in the bond, it is also compared to the share or stock. These are relatively easier in the sense, means the company are its owners. Yes, correct. Statement number 1 is the correct. Lower risk than the stockholder. Statement number 1 is the correct answer. Okay. Now statement number 2, bondholders are lenders. Bondholders are lenders to a company, whereas stockholders are its owners. Whereas stockholders are its owners. Already I have told you. Look at this. Now if you look at the particular statement, this is also correct. Yes, just few minutes before I have explained that bond holders basically they get interest payment, so they are not ownership, so there is less risk. This statement is also correct statement. Statement number 3, for repayment purpose bond holders are prioritized over stockholders. Yes, when there is a part of the repayment, bondholders will get first the payment, then after only the stockholders will get the payment. Remember, the only advantages of having a stock is high return, and but the advantages of having a bond is less riskier. In case of the liquidity of a company, the bondholders will get the money earlier compared to the stockholders. So this is also correct statement. So what will be the right answer? Right answer is yes, both statement 2 and 3 are correct,
and both of them explain statement 1. Yes, both statement 2 and 3 are correct, and it has explained also statement number 1. So A is the right answer, students. A is the right answer. Next questions, let us go. Question number 58. Okay, question number 58. India accounts for very large portion of all equity options contracts traded globally, thus exhibiting a great boom. India accounts for a large portions of all equity options contract traded globally, thus exhibiting a greater boom. Yes, this is also correct. India indeed has a large portions of equity, so thus making the entire ecosystem of economy, making the Indian companies much more reachable at the global platform. So statement number 1 is the correct one. This is the statement number 2. India's stock market has grown rapidly the recent past, even overtaking the Hong Kong's at some point of time. Yes, this is also correct. Okay, this statement is correct. India at some point of time, India has surpassed Hong Kong's stock exchange. This statement 1 and 2 are correct statement. Now, there is no regulatory body either to warn the small investment about the risk of options trading or to act on unregistered financial advisor in this regard. This is wrong, students. This is wrong. If you look at the analysis also here, I have already given. There are no regulatory body. Yes, there is regulatory body, and that is SEBI. That is SEBI. So statement number 3 is wrong. So that means the right answer would be A is the right answer. A is the right answer. Now, last two questions. Question number 59. Question number 59 considers the following statements. It says that statement number 1, circular economy reduces the emissions of greenhouse gases. Circular economy means what? What do you understand by circular economy? Circular economy means if you are using a product, once the product is discontinued for some reason, then the same product, the discontinued product can be input to certain other economy. Let me simplify. If you use milk, milk is consumed for our daily purpose. Let's say due to some reason the milk got wasted, but in reality the milk is not wasted. It is converted to, you can say, ghee or paneer, okay, etc. further. So that is basically a circular economy. This is a small example of circular economy. Now in circular economy, emissions of greenhouse gases, ठीक है. Circular economy reduces the use of raw materials as inputs. Yes, this is also true. Statement number 2 is true. Statement number 3, circular economy reduces wastage in the production process. Yes, it reduces the wastage in the production process. Answer would be A. Both statement 2 and 3 are correct, and both of them explain statement number 1. That is the reason why in circular economy the emissions of greenhouse gases it reduces. Why? Because circular economy reduces the use of raw material, and also it reduces the wastage during the production process. These are the two reasons why in circular economy the emissions of greenhouse gases are less. Now in the question number 60 of your economy, question number 60 of your economy, okay, let us go. Consider the following statements. Which of the statement given above are correct? Which of the statements given above are correct? Now question number 60, it is saying that capital receipts create a liability. Okay, let me just, yes, capital receipts create a liability or cause a reduction in the assets of the government, or cause a reduction in the assets of the government. Yes, true. Capital receipts, they create liability and also cause a reduction in the assets of the government. Borrowing and disinvestment are capital receipts. Yes. What do you mean by disinvestment? Disinvestment means when the government in its public sector units, there are many public sector units like Indian Oil Corporation, State Bank of India, okay, so they are public sector unit. Why? Because majority of share are by the government. Let's say in one PSU government has 60% of ownership. Now in order to be a owner you have to have more than 50%. If you have more than 50%, you are the owner. Let's say government has
made a sale of, for example, 15 percentage. So this 15 percentage will be sold to the public, and against which government will generate revenue, but it will keep the ownership, because after getting 15 percentage of 16, so government still has 55 percentage, which is the owner. Now this is called a disinvestment, is nothing but capital receipt. This is also correct. Interest received on loans creates liabilities of the government. No, interest received on the loans are not liability, they are add-ons, they are revenue. So this statement is wrong. So right answer is 1 2 are the right answer, 3 is not the correct answer. Okay, so students, all of these questions are related to your, all of these questions are related to your, I would say, related to your economy. Yes. So next, please wait. Next sir will be joining very soon. Please wait for next discussion. Do not go. Okay, sir will be joining very soon, so that you can, I have only discussed the polity portion, I have discussed the IR portion, and I have discussed the economy portion. Remaining portions will be discussed by our renowned two faculties. One is Kanha Jha sir, another one is Prabhakar Jha sir, having years of experience in the UPSC field. So now they are going to discuss their own portions. So thank you so much for the time being, but please wait, nothing, do not go anywhere. Sir is going to start very soon related to the particular discussion. हो गया क्या सर? सर देख रहे हैं सर, आप कर लिए ना सर स्ट्रीमिंग सर? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट हम चेक कर रहे हैं। हो गया सर? स्टार्ट करें सर? जी सर? स्टार्ट कर दूं? हाँ सर, अभी अभी हो जाएगा, ऑटो ऑटो ही होगा, क्योंकि लाइव में भी चल रहा है ना। आप स्टार स्ट्रीमिंग करें ना, उसके बाद आपके ही मिलेगा। ओके, तो मतलब यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट कर दूं मैं? सर एक सेकंड हम चेक करेंगे, वो शो हो जाएगा तो हम आप स्टार्ट करेंगे सर। ओके, प्लीज बता दीजिए। जी सर, स्टार्ट करें सर। Hello friends, welcome to Ray Academy, and first of all I hope so your preparation is going on right track and you have done very well. Basically, if you appeared in this UPSC Civil Service Examination 2025, I hope so your performance was too good. Okay, and also I would like to say one thing. Basically in this session our sir discuss about polity, economy, IR, these things. As you know, in this session I'm going to discuss about the history, okay, then art and culture, then current affairs section, and science and tech. And we'll have to understand the few things. First of all, if you talk about the you can say like this year exam, I can say if you talk about this year exam, if you compare, so I can say this was the, you can say, easy to moderate. If you compare with the 2024, okay, so I can say yes, of course, the paper was lengthy. Okay, of course, the paper was lengthy, but if you talk about the difficulty level, if you go through the UPSC, you can say na this year paper, just like you can say economy, or maybe IR, maybe geography, maybe you can say polity, maybe science and tech, maybe current affair. The question was lengthy, no doubt, but the level was, you can say na easy to moderate. Yes, only basically I already you can say na gone through this 100 question. I find only, you can say na 5 to 10 question was toughest question, bouncer question. But if you talk about to, you can say 85 to 90 question, that was durable for serious aspirants. You'll have to keep in the mind, and also you'll have to understand about the, you can say like trends, about the nature. Basically I'm talking about you can say these things for the upcoming 2026 aspirants. Okay, if your performance was good basically in the 2025, be ready for a mains. Okay, just keep your time for mains, you can say like preparation. And as you know, mains is all the things, prelims is just a hurdle, just you'll have to cross the prelims. Okay, this is also, you can say like a speed breaker, but you will get the rank and the result from the mains examination. So please focus on your mains examination. If you are able to, okay, fetch, you can say 80 plus marks, I can say easily 80 plus marks, just keep your, you can say upcoming 2 or 3 months for your mains examination.
If you'll able to crack prelims, well and good. Otherwise, these preparations will be very helpful for your upcoming examination. And as you know कि before you can say ना कि prelims, according to me, we should try to focus on our mains examination also. So it's my humble request as a you can say ना कि your mentor, as a faculty, I would like to say only few things. Now please do not think about what was your performance. Let's suppose if you appeared, if you done very well, well and good. If you are not able to fetch, you can say 70, 75 marks, no problem. Just give your time, okay? Just give your time for what? Please keep in the mind. Just give your time for this year. You can say for upcoming examination, because upcoming examination is really very important for you. And also I like to say one thing. If you basically talk about the upcoming examination, okay, you'll have to learn. आपको कहते हैं ना कि आप लोग को सीखना चाहिए कि क्या आपका मिस्टेक हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, इन सारी चीजों को हम लोग को डिस्कस जो है करना है, मतलब करेंगे, सर भी आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं, हम लोग भी डिस्कस करेंगे. बट now let's move ahead. I'm going to discuss about, I'm going to analyze the, you can say now, history, art and culture portion. Then after that we'll discuss about the current affair portion, science and tech portion with the proper explanation. Just Shankar sir basically completed the session. So now I'm going to start. So let's start with the first question, okay, from the history and art and culture section. And before moving ahead, I would like to say, of course, in ancient history, there was only few questions, okay, one or two questions I can say, okay. Medieval history, only you can pre-medieval, there was 2 question lump sum. But from modern history, UPSC asked lots of question and one-liner question and question related to also you can say ki national movement. And as you know कि last 2 or 3 you can say years UPSC asked only few questions related to modern history. But this year UPSC basically you can say now he asked lots of questions related to modern history, and this year the number of questions for geography, environment was reduced. Okay, so let's move ahead. The first question is, sedition has become my religion was a famous statement given by Gandhi ji at the time of first, the Champaran Satyagraha. Second, publicly violating salt law at Dandi. And then third, attending the second roundtable conference in London. And the fourth, the launch of Quit India movement. I can see your comment. Please try to, okay, comment. So I would like to, okay, see your comments. अगर आप लोग को भी पता है तो प्लीज आप लोग कमेंट जो है शेयर जो अपना कमेंट जरूर करिएगा. मैं आप लोग का कमेंट जो है देख भी सकता हूँ. सो प्लीज आप लोग भी जो है करिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ. एंड आप लोग को पता ही है कि ये जो अगर मैं बात कहूं कि ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये आपको आइडिया देगा कि नेक्स्ट ईयर कैसे जो यूपीएससी क्वेश्चन जो है पूछ सकती है, कहां पे हमें जो है आपको जो फोकस करने की जरूरत है. ठीक है, तो ये आप लोग को भी ध्यान में रखने की जरूरत है. चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं. सबसे पहले कि अगर आप बात करेंगे व्हाट शुड बी द आंसर, आप लोग भी कमेंट करिए. ओके, सो प्रज्ञानश्री, वेरी गुड प्रज्ञानश्री. आई एम प्रज्ञानश्री इज रेगुलर स्टूडेंट. ओके, सो आई नो सुनीता, प्रज्ञानश्री. ओके, सो आंसर शुड बी व्हाट. लेट्स डिस्कस. बेसिकली एज यू नो कि कहते हैं ना कि गांधी जी क्या, अगर हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं, थोड़ा लॉजिक भी लगाते हैं. लेट्स सपोज इफ आई डोंट नो एंड देन हाउ कैन आई सॉल्व द क्वेश्चन. चंपारण सत्याग्रह इन 1970. ओके, क्या 1970 गांधी जी वापस ही आते 1915 में? अगर 1915 में वापस ही आते तो उनके ऊपर कोई केस वेस ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं. नॉर्मली देखे तो चंपारण सत्याग्रह जो हमारे बिहार में, ठीक है. एंड देन उसके बाद अगर आप बात करें, वेरी गुड मोहित, देन पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ, अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. सेकंड क्या है कि अटेंडिंग द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. आपको पता होगा 1931 32 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें ऐसा कोई सेडिटेशन की चीजें है ही नहीं. ठीक है. एंड देन लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. जो क्विट इंडिया मूवमेंट अगर आप देखेंगे 1942 में. ठीक है. एक चीज अगर आप देखिएगा कि गांधी जी जो है कहते हैं ना साबरमती आश्रम से डांडी तक जो आपके मार्च किए थे, और उसी में गांधी जी ने बोला था कि सेडिटेशन हैज बिकम माय रिलीजन, and it was a famous statement given by the Gandhi ji at the time of publicly violating salt law at Dandi March, okay, or at Dandi. Basically, also you'll have to discuss about the one thing, the statement sedition has become my religion was famously made by Gandhi ji, okay. And also you can say now ki we'll have to understand basically in a Dandi March Gandhi ji gave this concept. And there was also you can say ना कि salt break like this, कि आपको पता ही होगा क्या होता था, ब्रिटिशर ने जो है आपका रेगुलेट कर लिया था. ठीक है,
तो उतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत टाइम जो है आपको लग जाएगा। एंड ड्यूरिंग द दांडी मार्च, गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स ओके मार्च टू कोस्टल टाउन ऑफ दांडी to break the British salt laws, and it was a symbolic act of civil disobedience. And also it was at this point that he made the statement and emphasizing his willingness to defy the British authority even it meant facing charges of sedition. Okay, please keep in the mind. Now let's move ahead. So answer was what? Answer should be directly B. Answer should be what? Answer should be directly B. Please keep in the mind. Now let's move ahead, and we already discussed this thing. So next question. If this is very easy question, and why UPSC asked the question, I will be basically I will give you the you can say context also. आपको 2023 में भारत मंडपम में ठीक है डांसी गर्ल के जैसे ही जो है एक आपका स्टैचू लगाया गया था. सो दैट्स व्हाई यूपीएससी आस्क्ड, यू नो कि यूपीएससी आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस टॉपिक वाज इन न्यूज करंट अफेयर. Okay, this topic was in news current affair. You'll have to keep in the mind. So the famous female figurine known as Dancy Girl found at Mohenjo-daro is made of okay carnelian, clay, bronze and gold. What should be the answer? Please keep in the mind. सेडिटेशन मीन्स जस्ट यू कैन से ना कि विद्रोह, अगर उनके ऊपर देश के अगेंस्ट भी जाने का अगर आरोप लग जाए और केस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है. ओके, एसएम एजुकेशन. सो व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर शुड बी डायरेक्टली यू कैन से ना कि ब्रॉन्ज. आप लोगों ने सुना होगा ना कास्ट्यूगेन, ठीक है. ब्रॉन्ज का जो है ये आपका जो बना हुआ था, किसका बना हुआ था? जो ब्रॉन्ज का जो है ये आपका बना हुआ था. प्लीज इन चीजों को आप लोग को भी ध्यान में रखना चाहिए. सो डायरेक्ट आंसर शुड बी व्हाट कि जो ब्रॉन्ज की अगर हम लोग बात करेंगे है ना. और मैंने एक चीज आपको ये भी बता दूं, बेसिकली द mesmerizing sculpture famously known as the dancing girl is one of the highest achievement of the artists of Mohenjo-daro. And this dancing girl basically it was a sculpture and it was made of bronze, and it belongs to the Indus Valley civilization and dates back to you can say 2500 BCE. एंड इट वॉज बेसिकली 10.5 सेंटीमीटर हाइट. अगर आप लोग बात करोगे इसके हाइट का तो आप देखोगे ये 10.5 सेंटीमीटर का टॉल था. ठीक है, उसके साथ ही अगर हम लोग देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डेप्थ. एंड presently it is on display in the Indus Valley Civilization Gallery in the National Museum, New Delhi. National Museum, New Delhi. Okay, so please try to understand. And also I like to say few things if you talk about the dancing girls. Okay, so it was in the news also, जो मैंने आप लोग को बताया था कि ये आपका जो है न्यूज में था. ठीक है, और आप लोग को भी इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए. देखिए यूपीएससी आपका क्या पूछ रही है? स्टैटिक क्वेश्चन पूछ रही है. ठीक है, लेकिन अगर आप लोग बात करेंगे कि जो डांसिंग गर्ल्स फिगरिन जो था वो आपके करंट अफेयर में, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि देयर वाज आल्सो वर्ड कि यू कैन से अ कंटेम्पोराइज्ड वर्जन ऑफ डांसिंग गर्ल्स okay figurine of Mohenjo-daro was used as a mascot for the International Museum Expo 2023 in Delhi. And the traditional craft of okay Channapatna toys also protected by a geographical indication tag. Okay, so आपको एक चीज ध्यान में you will have to keep in the mind, UPSC asked static portion but this topic was in also news. I used to tell to my learner, please keep in the mind, yes of course UPSC will ask question from the static portion plus B, but please be aware with the current affair portion. So this will be very helpful for you. Okay, now let's move ahead and let's see the next question. So you can see here ki who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of Chauri Chora incident. First C.R. Das Mohan Malviya, and first one is C.R. Das. Okay, and then second one is this is Madan Mohan Malviya and Krishna Kant. Okay, this one is second option B, Madan Mohan Malviya and Krishna Kant. Okay, third Dr. Saifuddin Kichlu and the Khwaja Hassan Nizami, and fourth M.A. Jinnah, Muhammad Ali Jinnah. What should be the answer? You can comment, please. Okay, comment. I can see your comment. Please. I'm requesting you. What should be the answer? Because you know there's a lots of you can say कि debate related to this question. Okay, कोई बोल रहा है आर दास, चित्ररंजन आर दास, सी आर दास. No भाई, सी आर दास नहीं है इतना. I can give you the clarity सी आर दास is not a correct answer. And as you know कि चौरी चौरा incident occurred on 4th February 1922. 4th Feb 1922. ठीक है, 4 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा का
इंसिडेंट हुआ था कहाँ पे, इन गोरखपुर, ओके, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द United Provinces, and that is at present it is known as Uttar Pradesh. And during a protest, a group of satyagrahi, okay, clashed with the police, and which escalated into violence. And then a police station was set on fire. क्या हुआ था कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था, 22 पुलिस वाले जो उस टाइम जल गए थे। फिर उस इंसिडेंट के बाद 172 लोगों को अरेस्ट किया गया, ठीक है, उसमें से 151 लोगों को ट्रायल पे जो भेजा गया, ये सारी चीजें जो आपका हुआ था। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं इस केस में, ठीक है, कि आर एस दास जो एक एक्टिव थे बंगाल में, नॉट इन्वॉल्व इन दिस केस, सी आर दास जो थे, चित्तरंजन दास जो थे, वो आपके एक्टिव थे बंगाल में बट नॉट इन्वॉल्व इन दिस केस। सैफुद्दीन किचलू एंड द ख्वाजा हसन, ओके, निजामी जो थे इन्वॉल्व थे एंटी रॉलेट एक्ट प्रोटेस्ट एंड खिलाफत मूवमेंट, नॉट इन दिस ट्राइब। Then Muhammad Ali Jinnah, A Jinnah was not associated with the Chauri Chaura incident or its aftermath. So what should be the answer? Answer should be directly, please keep in the mind, Madan Mohan Malviya and Krishna Kant. So answer should be what? B. Answer should be what? B. You can also comment. आप लोग भी comment करिएगा, ठीक है? So answer should be B. What should be answer? Answer should be B. Okay. And now also please keep in the mind कि पंडित मदन मोहन मालवीय, who established the Banaras Hindu University, okay, and he was a prominent lawyer and a freedom fighter, and voluntarily to defend the accused in the Gorakhpur Session Court, and along with the Krishnakant Malviya, Krishnakant Malviya was his son, Madan Mohan Malviya's son, and also legal professional. And due to their legal efforts, the sentence of many were commuted and a significant number were acquitted. And basically ki Madan Mohan Malviya's argument in a court are considered one of his most celebrated legal intervention in the freedom movement. So answer should be what? B. Madan Mohan Malviya and Krishna Kant. Okay. Now let's see the next one. Subsequent to the which one of the following events Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appeal for its eradication from all spheres, dedicated to include the upliftment of Harijan in his political and social program. ये तो ये एक ऐसे क्वेश्चन है ना जो आंख बंद करके भी लगाया जा सकता है, और मुझे लग रहा है यूपीएससी से ये गलती हो गया कि वो जो है इसको कहते हैं कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी आज सो मेनी टाइम्स also in various one day examination. Okay, so option what should be the answer? You can comment also. Okay, A, the Pune Pact, B, the Gandhi-Irvin Delhi Pact agreement, then arrest of Congress leadership at the time of the Quit India movement, and then promulgation of the Government of India Act 1935. What should be the answer? This is very simple question. मैंने आप लोग को बताया ना, शुरू में जो है गांधी जी इसके जो है आपके अगेंस्ट थे, ठीक है, लेकिन फिर बाद में जाकर के एक आपका जो है एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, और हम लोग कहते हैं कि गांधी जी जो है कौन से एक्ट से, यू कैन, व्हाट शुड बी द आंसर, प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर. Okay, so answer should be what? A, the Pune Pact. Answer should be what? A, the Pune Pact. Please keep in the mind. Answer should be what? A, the Pune Pact. And why Pune Pact? थोड़ा ध्यान से समझिएगा. Basically, the Pune Pact was signed on the 24th September 1932. 24th September 1932. कब? 24 September 1932 को ये आपका Pune Pact साइन हुआ था. And on the 25th September, there was a public meeting of the Hindu was held to accord their support. And Mr. Gandhi ji, okay, felt it necessary for an organization to be there, and that would devote themselves exclusively to the untouchables. Then on 28th September 1932, All India Untouchability League was established. Please keep in the mind. After the Pune Act, which you can say league was established, All India Untouchability League was established. And afterwards he changed it rename and it as Harijan Sevak Sangh. Okay, please keep in the mind. So Pune Pact was signed between whom? Dr. B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi on 24th September in Yerwada jail in Pune. Yerwada jail in Pune. Okay, so answer should be what? Answer should be the Pune Act. Answer should be what? The Pune Act. Okay, now let's move ahead. Let's see the next question. You can also do not worry कि my answer will be incorrect. थोड़ा सा गेस भी आप लगा सकते हैं ना, ऐसे नहीं है कि गेस नहीं लगा सकते हैं. आप लोग जो है गेस भी लगाने की कोशिश करिए, ठीक है. अगर जितना गेस लगाएंगे उससे आपको ही फायदा होगा, ठीक है. आप लोग भी सीख सकते हैं, ठीक है. जब आप सीख सकते हैं तो क्यों नहीं हमें गेस करना चाहिए? ऑफ कोर्स हमें गेस करना चाहिए, है ना. और अगर आप गेस करेंगे तो आप ही को फायदा होगा. सोचिए अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं,
ठीक है, गलत हो गया तो हो गया, उससे हमें क्या लेना देना, सही बताने के लिए मैं हूं ना, आई विल गिव यू द ऑल द डिटेल्स, ओके, सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस, सो अकॉर्डिंग टू मी प्लीज ट्राई टू कमेंट, ओके, जितना कमेंट करेंगे आप ही लोगों का फायदा, गलत वाले चीजें ना हमेशा याद रहता है, ओके, सो दैट्स वाई let's move ahead and let's see the next question. So you can see here, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रूट्स, इसके ऊपर बहुत डिबेट है, ठीक है, कहाँ क्या लाया नहीं लाया, मैंने एक रिसर्च पेपर निकाला और वहां से इसका आंसर जो है मैंने निकाला है, अब जाकर के बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन शुरू में जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया था बहुत सारे लोग जो है आंसर की दे रहे थे, देना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, कोई एक दो ऐसे ओनली वन ओनली टू ऐसे बोले थे, लेकिन जो मैंने रिसर्च पेपर निकाला उसमें प्रॉपर लाइन जो है इसके बारे में लिखा हुआ था। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रूट्स, यू विल हैव टू आल्सो कमेंट, आप लोग को भी कमेंट करना है, आई वुड लाइक टू सी योर कमेंट, ओके, first papaya, second pineapple, third guava. How many the above were introduced in India by the Portuguese in 16th and 17th century? A only one, B only two, C all the three, and D none. What should be the answer? Please try to comment. I would like to see your comment quickly. Please tell me what should be the answer. Please. What should be the answer? Please tell me the answer. I would like to see your comment. Please try. You can comment now. You should not wait. Okay, Pragyan Sri, SM Education. Okay. Sulata Gopinath. Okay. So then I will have to give you the answer. Okay. First of all, you will have to understand the few things. Okay. आप लोगों को कुछ चीजें जानना है. देखिए. Basically, as you know, कि Portuguese was the first European who arrived in India in 1498, and with the Vasco da Gama. Okay. And then you can say Portuguese established a colonial, okay, and you can say कि colonial presence of Portuguese was started from 1505 to 1961, okay, and they established trading posts and forts particularly in Goa, Daman and Diu, Dadanagar Haveli, and their influence was mainly limited to these colonies. And the Portuguese India era ended in 1961 when Goa, Daman and Diu, Dadanagar Haveli were annexed by India by, you can say, operation. And the Portuguese, okay, please keep in the mind, also introduced many new world fruits like pineapple, papaya, sapodilla, guava, and which found acceptance and become a part of Indian food culture. So directly we can see what should be the answer. Answer should be C, all of the three. Answer should be C, all of the three. Okay, आप लोग को भी ध्यान में रखिएगा, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पुर्तगालीज जो आपके पहले अपने इंडिया में थे, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे अमेरिकन क्रॉप जैसे मेजेस, स्वीट पोटैटो एंड कैप्सिकम भी अपने इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस किया था, जो अमेरिका के क्रॉप से, लेकिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर पुर्तगालीज ने जो है आपका न्यू वर्ल्ड फ्रूट्स जो है आपका पाइनएप्पल, पपाया, सैपोडिला एंड गुआवा भी जो है आपको इंट्रोड्यूस किया, और वो हमारे इंडिया के जो फूड कल्चर का जो है आपका क्या हो गया, पार्ट बन गया। ओके, सो आंसर शुड बी सी, ऑल ऑफ द थ्री। नाउ दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। देखिएगा, अगर मैं आपको अभी बताऊंगा भी, आई विल टेल यू कि यूपीएससी इन द हिस्ट्री सेक्शन, ओके, आस्क जस्ट आई कैन से कि लॉट्स ऑफ इजी क्वेश्चन, ओके, आफ्टर यू कैन से व्हेन आई विल बी एबल टू कंप्लीट द हिस्ट्री एनालिसिस देन आई विल शो यू। ओके, क्वेश्चन इज व्हाट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी? पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, भास्कर राव जाधव, दिनकर राव जावलकर। ओके, what should be the answer? Very easy question. Please try to comment. Please, it's my humble request. Please try to comment. What should be the answer? What should be the answer? Very easy. What should be the answer? Okay. What should be the answer? I'm waiting for your answer. You can comment. This is really very easy question. Okay, so let's move ahead and directly I'm going to tell you the answer. Answer should be what? Periyar, E.V. Ramaswamy Naikar, and he is also known as the Periyar. Basically, the self-respect movement was launched in 1925. Okay, in 1925 by E.V. Ramaswamy Naikar. Okay, E.V. Ramaswamy Naikar in Tamil Nadu, and the movement basically fundamentally altered the political and social fabric of southern India. And you can say it's a self-respect movement. It was an emancipatory movement unlike any other, and its aim was to empower individuals and communities
to challenge and overthrow the hierarchical structure that oppressed them. Okay, so I'll not go in detail, but please keep in the mind ki though the self-respect movement is you can say synonymously associated with the Dravidian movement, and they are key but you can say suitable differences, so I will not go in detail. And also why UPSC asked the question, we'll have to understand. Do you know why? In 2024, you can say कि 2024 marked the start of the 100 years of the self respect movement. So that's why UPSC asked the question. जो 2024 में आपका क्या था, ये स्टार्ट था, 100वां साल था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का. अभी मैंने आपको डांसिंग गर्ल का जो है आपका कॉन्टेक्स्ट बता दिया, अभी मैंने आपको ईबी रामास्वामी या सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का बता दिया कि व्हाई यूपीएससी आस्क्ड दिस क्वेश्चन. वी विल हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, अब आप लोग कहते हैं कि सर हिस्ट्री में भी सब कुछ पढ़ना है. कई बार हम लोग कहते हैं अगर आपने नहीं कुछ भी पढ़ा, लेट्स सपोज नाउ यू विल हैव टू अपीयर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सो यू कैन जस्ट फोकस द करंट अफेयर पोर्शन कि whatever topic was in use, try to cover the static portion. So answer should be what? A, EB Ramaswamy Nayakar, and he is also known as what? Periyar. Okay, he was also known as Periyar. Please keep in the mind. Now let's see. I already mentioned this thing. Okay, sir will share the slides, so that will be very helpful for you. Now consider the following statement about Rajaram Mohan Rai. Consider the following statement about Rajaram Mohan Rai. As you know, okay, Rajaram Mohan Rai, okay, he is also known as the father of modern India, we can say. Okay, father of Renaissance कई बार हम लोग कहते हैं. So let's see the you can say कि statement related to Rajaram Mohan Rai. He possessed great love and respect for the traditional philosophical system of the East. Yes, of course, वो वेदांत में जो है आपके बिलीव करते थे, अपने जो ट्रेडिशन में भी आपके बिलीव करते थे. ठीक है. Then he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women. Of course, अगर बात करेंगे, आप लोग भी ये पहले बताइए, मेरे हिसाब से तो क्या आंसर होगा तो मैं बताऊंगा, but you should try to participate, try to give me the answer. What should be the answer for this question? What should be the answer? Please comment. I would like to see your comment. Okay. Also you can share this session with your friends ना. आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है इसे जो है आप शेयर कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये सब जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. सो आप लोग शेयर करेंगे तो आप लोग के लिए भी जो है आपका बहुत ही इजी होगा और आप लोग भी जैसे जो है देख सकते हैं. ठीक है, बिकॉज एज यू नो कि दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड ट्राई टू पार्टिसिपेट. मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ जो है प्रॉपर जो है डिस्कशन, प्रॉपर जो है एनालिसिस आई कैन गिव यू, जो मैं आप लोग को दे सकूँ. ठीक है, सो लेट्स सी द आंसर. सो आंसर की बात करेंगे, आंसर शुड बी सी डायरेक्टली. देखिए, I already told you about कि Rajaram Mohan Rai. Okay, if you talk about the Rajaram Mohan Rai, he was basically you can say ना कि known for his love and respect for Eastern culture, particularly those of India. And Rajaram Mohan Rai was a scholar of Sanskrit, Persian, Arabic, and Rajaram Mohan Rai deeply understood Indian philosophy, including Hinduism, Buddhism, then also Islam. And Rajaram Mohan Rai was a strong advocate for the rationalism, scientific and reasoning. And he actively promoted critical thinking and advocated for a more enlightened society based on the logic and evidence. So what should be the answer? Answer should be C. Please keep in the mind. So answer should be what? C. So both the statements are correct. Both the statements are correct. Okay. Now, next question. Consider the following subjects with regard to non-cooperation program. First, boycott of law courts and foreign clothes. Okay. Observance of strict non-violence. Okay. Retention of titles and honors without using them in public. Okay. Establishment of panchayat for setting disputes. Okay. How many of the above were part of non-cooperation program? A only 1, B only 2, C only 3, D all the 4. अब आप लोग को बताना है कि इसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें था. ठीक है, आप लोगों से भी मैं जानना चाहता हूं व्हाट शुड बी द आंसर. अगर आप लोग भी देखिएगा एंड प्लीज ट्राई टू कमेंट व्हाट शुड बी द आंसर. ओके, चलिए ठीक है. तो अभी प्रज्ञानश्री का जो है कमेंट आ चुका है सी, बाकी सुजाता, ठीक है, नमिता. ओके, देन नाउ लेट्स मूव अहेड. So I'm going to tell you the answer. If you talk about the first कि non-cooperation program, first of all please try to understand non-cooperation movement between 1920 to 2022. एक और क्वेश्चन हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ था, है ना.
एंड ये जो है आपका अपने आप में क्या था कि ये नॉन वायलेंस था, इसका जो कोर प्रिंसिपल जो महात्मा गांधी का जो फिलॉसफी था सत्याग्रह, और जो एकदम जो है आपका नॉन वायलेंस था। वायलेंस हुआ इसलिए गांधी जी ने वापस ले लिया, ठीक है। इसी के बाद जो है हम लोग कहते हैं कांग्रेस के अंदर भी पार्टिसिपेशन जो है, पार्टिसिपेशन मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारे लीडर जो है गांधी जी के जो इन डिसीजन से खुश नहीं थे। So if you talk about the key aspect of the non-cooperation movement was the boycott of law courts and foreign clause, and as well as basically other forms of non-cooperation with the British government. So this movement launched by Mahatma Gandhi, what was the aim? Aim to achieve self-rule, Swaraj, through peaceful resistance. So if you talk about the first option, ki boycott of law courts and foreign clause, of course this is correct. Okay. Then observance of state violence, of course, अगर आपको let's suppose if you talk about the Gandhiji movement, so automatically it will be now you can say non-violence. Second is also correct. Okay. Then उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से थोड़ा समझिएगा कि during the non-cooperation movement, individuals were encouraged to renounce title and honorary position given by the British government as a form of resistance. So this included returning, you can say, British Raj medals, titles, and honors. Notable examples include Mahatma Gandhi surrendering his title Kesar Hind, Lala, you can say na कि मुरलीधर राय given up his Rai Sahab and Kesar Hind titles. Okay. So what retention of title? Retention कैसे हो सकता है? वापस करना है. Retention कैसे हो सकता है? Return नहीं होगा, ठीक है? Retain नहीं करना है. तो अगर आप बात करोगे थर्ड का, तो इसका क्या होगा? ये गलत जो है अगर आपका हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर हम बात करेंगे थर्ड इज इनकरेक्ट. ओके. फोर्थ, establishment of panchayat for setting disputes. Of course, during the non-cooperation movement of 1920 or 2022, our Mahatma Gandhi encouraged the establishment of panchayat and as a way to resolve dispute, particularly in response to the boycott of British courts. And panchayat, which were basically you can say which are traditionally village council and were seen as a form of alternative dispute resolution, and it aiming to provide justice and address local issues outside the British Raj legal system. And so what should be the answer? Answer should be C, only 3, because the third option, okay, third option is incorrect. अगर आप बात करोगे थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है और बाकी जो है आपका सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है. So answer should be directly what? Only 3. Okay, only 3. Now let's move ahead. The question, the irrigation device called Araghatta was, ये repeated question है. This is repeated question. Okay, repeated question by UPSC. इससे पहले भी UPSC ने ये question जो है आपका पूछा हुआ है. So you can see here the option. Option is what? A water bag made of leather pulled over a pulley, a large wheel with the earthen pot tied with the outer ends of its spokes, a larger earthen pot driven by bullocks, a large water bucket pulled by the rope directly by hand. So what should be the answer? Please comment your answer. What should be the answer? You can, I know you can comment, no problem. If you'll basically make incorrect, no problem, but I like to see your answer. So what should be the answer? Let's see directly. This is a repeated question. Basically ki Araghatta is a Persian wheel. Okay, please keep in the mind, Araghatta is a what? Persian wheel. Persian wheel. Okay, and then also you can say now Persian wheel, and it was a mechanical water lifting device used for irrigation in medieval India, and it's a wheel with buckets or pots attached, rotated by animals like you can say bullocks or camels, and raising water from wells to irrigated fields. So the name Araghatta comes from the Sanskrit words ara. Ara means spoke, ghatta means pot. Okay, and referring to the structure of the wheel. So what should be the right answer? Answer should be, this is a B. Okay, large wheel with the earthen pots to the outer, please keep in the mind, to outer ends of its spokes. So I told you that Araghatta is a Sanskrit word. Okay, it is a combination of two Sanskrit words. Ara means spoke, ghatta means pot. Okay, please keep in the mind. So we have discussed this thing. Now let's move ahead. Next one. Who among the following rulers in ancient India had assumed the titles, okay, Mata, Vilasa, okay, Vichi, Trichat, then Gunabhara? Very easy question. Mahendra Varman 1, then Sim, Vishnu, Narsimha, okay, Varman 1 and Simha Varman. What should be the answer? So answer should be what? Answer should be directly, I can say now, you can say A, okay, Mahendra Varman first.
So the title Matavilasa, Vichitra, Chita, and Gunabhara were held by Mahendra Burman I. And Mahendra Burman was who? Mahendra Burman was Pallav king. Mahendra Burman was what? Mahendra Burman was Pallav king. Please keep in the mind. This is important. Okay, Mahendra Burman was Pallav king. And basically ki Mata Vilasa means you can say addicted to pleasure. Okay, Mata Vilasa means addicted to pleasure. Okay, Vichitra Chitta translate, you can say translate to curious minded, and Gunavara signifies virtuous. So Mahendra Burman first was also known as, you can say na, Chitra. Okay, Chitra Kara Pulli, tiger among painters. Okay, and Mahendra Burman one was a prominent ruler of Pallav dynasty and known for his artistic and literary contribution, as well as his patronage of various artistic activities. So answer should be what? Directly A. Answer should be A. So answer is option A. Okay. So answer is A. Now let's move ahead and let's discuss the next thing. Very easy question. Fahiyan. Okay. The Chinese pilgrimage या pilgrim traveled to India during the reign of. There is a trick ना, चीनी यात्री को फांसी हुई. Okay. Fahiyan, Wensang, Itsing, and then Wensang comes under the, you can say, Harshvardhan. Okay. Then after that, Fahiyan comes under the Chandragupta second. So directly I give you the answer. Answer should be what? Chandragupta second. Answer should be what? Chandragupta second. Please keep in the mind. Basically the Fahiyan traveled to India during the, you can say, era of Chandragupta second of the Gupta Empire. And he was a Chinese Buddhist pilgrim who came to India in the early 5th century AD. Early 5th century AD. Okay. So please keep in the mind, this is the answer. Answer is what? Chandragupta second. Answer is Chandragupta second. Okay. Then now let's move ahead, and then you can see here, who among the following led a successful military campaign against the kingdom of Sri Vijay, okay, the powerful maritime state which ruled by the Malay Peninsula, सुमात्रा जावा एंड नेबरिंग आइलैंड्स. अगर आप लोगों ने सदर्न इंडिया का कोई मूवी देखा होगा, इसके ऊपर ऐसे मूवी भी बेस्ड है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें अमोघ, ओके, वर्ष राष्ट्रकूट, नो. अगर इसके देखें इसका आंसर ये नहीं होगा. देन जो है आपका प्रता, ओके, पारुद्र काकतीय से, नो. देन विष्णुवर्धन होयसला, नहीं. चोला. अगर राजेंद्र फर्स्ट की अगर बात करेंगे, ओके, राजेंद्र फर्स्ट जो था वो आपका क्या किया गया था, मिलिट्री ऑपरेशन सक्सेसफुली जो है आपका लॉन्च किया था. ओके, सो आंसर शुड बी सी. ओके, सो राजेंद्र फर्स्ट चोला वी कैन से, राजेंद्र चोला वी कैन से. दिस इज रियली very important. So the Chola king who led a successful campaign, okay, against the kingdom of Sri Vijaya was Rajendra First Chola. And Rajendra First Chola expedition, which took place in, you can say, 1025 AD. 1025 AD we can say, okay, 1025 AD, and it resulted in a significant weakening of Sri Vijaya and its influence over Southeast Asia. Okay. So this is really important. So answer should be what? Rajendra one Chola. So answer is C, option C. Now let's move ahead. Let's see the next question. With reference to ancient India between 600 to 322 BC, consider the following pairs. Okay. First one is Asmak. Okay. There is a territorial region and river flowing the region. So if you talk about Asmak, Kamboj, Avanti, Kosal, these are the, you can say, Mahajanpada. Okay. If you go through the topic Mahajanpada, 16 Mahajanpada. Okay, so you'll have to understand. So let's see and let's discuss one by one. Okay. Asmak, it is also known as Asaka. Okay, and so Asmak territorial region was located on the banks of Godavari River. So answer first is correct. Okay, first is correct. Please keep in the mind. And also ki Asmak was one of the 16 Mahajanpad in ancient India. And it was situated in the southern part of subcontinent, and Asmak basically covering parts of present day Telangana, Maharashtra, Andhra Pradesh. And its capital was basically variously named as Podan, okay, Potali, then the Podan Pura, okay, or Potan, and identify modern day Bodhan in Telangana. So the region lay between the Godavari River and neighboring territories such as Mulaka and Kaling, okay, Kalinga. Pair 2, Kamboj and Bipasa. No, Bipasa river, known in the modern time as Vyasabha, okay, flow through the states of Himachal Pradesh and Punjab in northwestern India. And the ancient Kamboj territorial region, it is basically described in the historical and Vedic sources, was generally located further northwest. Okay, around now is you can say now
eastern Afghanistan, northern Pakistan, not in the direct path of Bias or Bipas river. Okay, so therefore the second option is incorrect. Please keep in the mind. Then Avanti, Mahananda, no, this is also incorrect. Basically the Mahanandi, you can say na, Mahanadi river does not pass through the Avanti kingdom. Okay, and the ancient Avanti kingdom was located in the region corresponding to present day Malwa and parts of western Madhya Pradesh. So its main river was Narmada, okay, with the Mahismati as a southern capital also, and Shipra, okay, with Jain as a northern capital. So the Mahanadi river, on the other hand, please keep in the mind, flow much further east, primarily through present day Chhattisgarh and Odisha, and does not cross the territorial historically associated with Avanti. So third is also incorrect. ओके, फोर्थ कौशल, ये सब कुछ सर यो कौशल, अभी जो अयोध्या वाला अगर आप इलाका देखिएगा ऑफकोर्स इसका आंसर होगा. सो द कौशल किंगडम वाज लोकेटेड ऑन द सरयू रिवर एंड एंशिएंट सोर्स एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ओके कंफर्म्स दैट कि कौशल extend across both the banks of Saryu, modern Ghaggar river with capital Ayodhya situated on its bank. Okay, and as you know ki Saryu was the principal river of Koshal region and played a central role in its geography and history. So what should be the answer? Answer should be, you can say, only 2. Answer should be only 2 because second and third is incorrect. So answer should be what? Only 2. First and fourth is correct. Okay, so answer should be what? Only 2. Now let's move ahead and let's see here. The first Gandharv Mahavidyalaya, a music training school, was set up in 1901 by Vishnu Digambar. Okay, पलुस्कार इन. वेरी टफ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका क्वेश्चन पूछ लिया तो हमें आंसर जो है निकालना पड़ेगा. दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर. सो बेसिकली द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, ओके, विच वाज अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल and it was set up in Lahore on 5th May 1901. 5th May 1901. 5th May 1901 by Vishnu Digambar, okay, Paluskar. And on 5th May 1901, okay, Paluskar, you can say, set up a music school called Gandharv Mahavidyalaya in Lahore, and which included a hostel, an instrument repair section, and a printing press of music publication. Okay. And there was also, I can see now, there was a news, basically there was an article in The Hindu. I can remember, maybe in, you can say, there was, you can say now, before 2 or 3 years ago, I can remember there was an article in The Hindu. Okay, so maybe that's why UPSC asked. Okay, but no problem, this was the really toughest question. Okay, so answer should be what? Answer should be D, Lahore. Answer should be D, Lahore. Okay. Now let's move ahead and let's see the next question. Ashoka inscription suggests that the Pradeshika, Rajuk and Yukta. This is also previous year question. UPSC already asked in so many exams. Important officer at the village level administration, district level administration, provincial administration, level of the central administration. What should be the answer? You can comment. आप लोग भी बताइए क्या होगा आपका आंसर. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यूपीएससी इसके ऊपर जो है आपका पूछा हुआ भी है. क्या होगा इसका आंसर? You can comment. Okay. So let's move ahead. Basically, ki Ashokan inscription suggests that ki Pradeshika, Raju, and Yukta were important officers at the what? District level of the Mauryan administration, and these officers played key role in a local governance, revenue collection, land measurement, and the implementation of royal and public welfare measures within their respective district. सो इफ यू टॉक अबाउट, अगर आप बात करते हैं प्रादेशिका का, राजू का, युक्ता का, ठीक है, ये की ऑफिसर थे अशोका के एडमिनिस्ट्रेशन में, बिकॉज इनके पास एक बेटर रिस्पॉन्सिबल था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल, और ये इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. तो जो प्रादेशिका थे वो आपके द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे, एंड वो जो है ओवरऑल फंक्शनिंग जो है डिस्ट्रिक्ट का उसको देखते थे, और बेटर जो है आपके इंप्लीमेंटेशन, रॉयल ऑर्डर्स एंड पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते थे. जो राजुक था वो रेवेन्यू ऑफिसर, लैंड सर्वेयर हुआ करता था, ठीक है. युक्ता जो था वो जो अकाउंटेंट या ट्रेजरर हुआ करता था, ठीक है, अकाउंटेंट और ट्रेजरर जो है आपका हुआ करता था. तो ये ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है आपके देखते थे, ठीक है. जब हम लोग अगर बात करते हैं राजुक का, तो ये जो था आपका राजुक जो था, अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में जो है वो आपके काम करते थे, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में जो है काम करते थे, ठीक है. सॉरी, रेवेन्यू ऑफिसर नहीं, इनको हम बोलेंगे लैंड, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर या लैंड सर्वेयर के रूप में काम करते थे.
और युक्ता जो थे वो अकाउंटेंट या ट्रेजर थे। युक्ता जो थे वो अकाउंटेंट या ट्रेजरर जो है आपके हुआ करते थे, ठीक है। और ये तीनों कहाँ पे थे, ये तीनों जो थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सो व्हाट शुड बी द आंसर, आंसर शुड बी बी, आंसर शुड बी व्हाट, बी, आंसर इज व्हाट, बी। ओके, प्लीज कीप इन द माइंड, वेरी गुड। Now let's move ahead. Let's see the next question. Here is a question. Consider the following statement in respect of non-cooperation movement. Okay. The Congress declared the attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means to be its objective. Okay. Second, it was to be implemented in stages with a civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage of next stage only if Swaraj did not come within a year and the government restored to repression. Which of the above statements are correct? A one only, B two only, C both, D neither one nor two. Both this is really also very easy question. ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे। ओके, बेसिकली आपको पता होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे, ठीक। तो जो नागपुर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 में, नागपुर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था 1920 में। ओके, जो नागपुर में जो आपका सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 में, उसी में कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था अटेनमेंट ऑफ स्वराज, सेल्फ रूल का, बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मींस टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। सो ये आपका अपने आप में क्या था, सिग्निफिकेंट शिफ्ट था कि एज द कांग्रेस कमिटेड इटसेल्फ टू अचीविंग सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू नॉन वायलेंट एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड which became the guiding principle of the national you can say non cooperation movement. So first one is directly clear, you can say ki correct. Okay, first one is correct. Very good evening. And then of course, and second, it was to be implemented in stages. Okay, it was implemented in stages. So the non cooperation movement was designated to be implemented in stages, just like the first peaceful and non violent action such as surrendering government titles, resigning from government jobs, boycotting government schools, colleges, courts, foreign goods were to be carried out. And then after that, next, if Swaraj, self-rule, was not achieved within a year, and if the government restored to repression, the movement would escalate to include civil disobedience and non-payment of taxes at the next stage. Okay. So the basically this stepwise escalation was a key feature of movement strategy under Gandhiji leadership. Okay. So what should be the answer? Answer should be C. Both the statements are directly correct. Both the statement is correct. 1 and 2. Okay, please keep in the mind. So answer should be what? C. Both the statements are correct. Okay. Now let's see the next portion. In history, we already discussed all the question. Okay. Quickly, I'm going to tell you about the easy question like this, so you'll be able to recall also. Yeah. So segregation has become my religion. This is the moderate question. Okay, this was the moderate question. Famous girl, very easy. Okay, very easy. Then after that, Chori Chora, this was the, we can say, difficult. Okay, this was the difficult. Then subsequent of Gandhi's follow events, Pune, this was very easy. Then after that, this one was logical, but I can say this was moderate. Okay, then after that, very easy. Then after that, Rajaram Roy, very easy, easy question. Okay, then after that, non-cooperation movement, of course easy. Okay, retention of titles, it is not possible. ये कैसे हो सकता था? तो थोड़ा मैं moderate रख लेता हूँ एग्जामिनेशन हॉल के हिसाब से. Okay, irrigation device, this was the previous year question, so easy. Then this one was moderate. It was moderate and also I can say difficult, क्योंकि ये सारी चीजें इतना याद नहीं होता. Okay, then very easy, Fayan. Also this was the repeated question. Okay, and military campaign, yeah, this one was the you can say ना कि tough, I can say of course this was the toughest question. Okay, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका जो है एक आपका टफ क्वेश्चन जो है ये था. ठीक है, प्लीज आप लोग इन चीजों को ध्यान में रखिएगा. तो ये क्या था आपका एक जो है टफ क्वेश्चन हो गया. ठीक है, क्योंकि ये सब इतना थोड़ा याद नहीं रहता क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल है. ठीक है, क्या है कि आपका बहुत ही फैक्चुअल है. सो दैट्स वाई इन चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था जो हम लोग के लिए थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट हो सकता था. ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड
and let's see the next one. So just a minute. What happened? Just a minute. Just a minute. Just a Yeah. So I told you this was the moderate question, या टफ भी बोल सकते, इतना याद नहीं रहता. Okay. Then after that, very easy, self-respect movement. Then after that, very easy about Raja Ram Mohan Rai. दैन अगर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये थोड़ा सा मॉडरेट था, लेकिन अगर इसे थोड़ा सा लॉजिक लगाते, एलिमिनेट करते तो आंसर आ सकता था. ये भी आपका पीवाईक्यूज है, तो इजी में से रखूंगा. ओके. दैन आफ्टर डैट अगर हम लोग बात करते हैं कि ये आपका थोड़ा सा ये आपका टफ क्वेश्चन था, ठीक है. दैन आफ्टर डैट अगर हम लोग बात करते हैं ये इजी, वी ऑलरेडी डिस्कस. दैन जो है ये थोड़ा सा मॉडरेट या टफ भी इसे आप रख सकते हो, ठीक है. देन आफ्टर दैट ये जो है इजी है. 16 महाजनपद अगर आपने पढ़ा और लॉजिक लगाओगे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो. एंड ये आपका जो है आपका टफ था, ठीक है, डिफिकल्ट था ये. देन अशोक स्क्रिप्ट्स वेरी इजी, ये आपका प्रीवियस ईयर है. ओके. देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेन इजी में इसे रखूंगा, क्योंकि स्टेटमेंट से ही आपको आंसर जो है आ जाना चाहिए था. अब आ जाएंगे हम लोग साइंस एंड टेक के ऊपर, वन बाय वन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. साइंस एंड टेक को जो हम लोग को डिस्कस करना है, और एक एक करके जो हम लोग हर एक चीजें जो है डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं साइंस एंड टेक में, ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही देखिए साइंस एंड टेक में क्या होता है ना, मैं एक चीज आपको एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, समझाने की कोशिश भी करूंगा. अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो कई बार जो है आप रिस्क ले सकते हो कि ऑल 3 लेकर जा सकते हो, सी लेकर के जा सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट आपको समझना पड़ेगा. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. सो फर्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन. आप देखोगे पहला क्या है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन, ठीक है. और इसमें आपका जो है दिया हुआ है एक्जियम 4. देन जो है आपका स्पेस जो है डेक्स गगनयान. हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशन गिवन, ओके जी है, गिवन above encourage and support micro, okay, gravity research. A only one, B only two, C all the three, D none. लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ. अगर मुझे नहीं पता इसका आंसर, ठीक है, अगर मुझे सॉल्व करना होता, ठीक है, मुझे सॉल्व करना होता, और वैसे करंट अफेयर बेस्ड है, ठीक है, साइंस से टेक तो है ही, तो मैं ऑलमोस्ट सीधा जो मैं क्या करता है, मैं सभी के साथ जाता. नहीं आता मुझे तो मैं रिस्क अगर लेना होता तो. So basically, as per the ISRO official, you can say announcement, the 7 Indian micro, you can say gravity experiment will be conducted on the International Space Station during Axiom 4. And statement first is correct. SpaceX mission is a cost-effective technology demonstrator mission for the demonstration of in space docking using two small spacecraft launched by PSLV. And it provides an opportunity for the scientific community to carry out certain in orbit microgravity experiment for an extended duration up to 3 months. Third, ISRO has recently signed a new agreement to boost space medicine research for Gaganyaan mission. Okay, so the collaboration is set to bolster ISRO flagship human space, you can say, flight
initiative and Gaganyaan by posting research and innovation in human health and microgravity, space medicine and space biology. So directly what should be the answer? According to me, answer should be C, all the three. Okay, आप लोग भी comment करके बताते रहिए what should be the answer. So answer is C, all of the three. Okay. Then with reference to India's defense, consider the following. Pairs दिया हुआ है, एयरक्राफ्ट के टाइप दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन जो है आपका दिया हुआ है और आप लोग को जो इसका आंसर जो है आप लोग को बताने की जरूरत है. ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, पहला क्या है आपका डॉर्नियर 228 मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट. सेकेंड IL-76 सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. ओके, C-17 ग्लोब मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. How many of the pair given above are correctly matched? So you can comment also. I'm waiting for your comment. Okay, so please try to comment what should be the answer. Okay, Meenakshi, Pragyan Siri, then Sulata also. So you can comment. Okay, so what should be the answer? Let's see one by one. First of all, if you talk about the Dornier 228, okay, so Dornier 228 of course has been developed specifically to meet the main you can say manifold requirements of utility and commuter transport and third level services and air taxi operation, coast guard duties and maritime surveillance. So of course it is maritime patrol aircraft. So first one is correct. Second IL-76, यहीं पे आपको थोड़ा सर यहाँ पे दिया सुपरसोनिक, मतलब आपको ना अपने आप में क्या कर लेना है, क्या करना होता है ऐसे समय, अच्छा सुपरसोनिक दिया, ये हो सकता है क्या सुपरसोनिक, कहीं कुछ और ही तो नहीं है, ठीक है, हाइपरसोनिक तो नहीं है, ऐसे हमें थोड़ा समझना पड़ता है. ओके, सो अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन जो 2 है, ठीक है, वो इनकरेक्ट है कि IL-76 इट इज बेसिकली टैक्टिकल you can say air lifter with a fixed wing, 4 engines and turbofan that was created by the you can say Ilyushin Design Bureau in the Soviet Union, and its purpose was to transport large apparatus, okay, that were hard to reach, including remote region and war zones. And this is not a supersonic aircraft, okay, and its maximum speed in level flight was 528 miles per hour, that means 850 kilometer per hour. So how it can be? Basically the typical speed of supersonic aircraft is greater than 570 you can say mil per hour, that means ki also you can but less than 1500 mil per hour. Okay, so that's why ki second is incorrect. Third, C-17 Globe, of course this is military transport aircraft. So C-17 Globe Master, third, it is a high wing 4 engine T-tail military transport aircraft. Okay, and the multi-service C-17 can carry large equipment, supplies and troops directly to small airfields and harsh terrain anywhere in the world. Okay, so what should be the answer? Answer should be what? Only 2. B is the correct answer. Okay, very good. Now let's move ahead. This is a very easy question. देखिए, whenever you will get a high statement, automatically high statement should be incorrect. देखिए क्या है, with reference to unmanned aerial vehicle UAV, अभी भी भारत पाकिस्तान को लेकर के न्यूज में था, लेकिन उससे पहले ही क्वेश्चन बन चुका है जनवरी फरवरी में ही. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब देखिए सभी में क्या लिखा है, ऑल टाइप्स ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल कैन डू वर्टिकल लैंडिंग. इज इट नॉट पॉसिबल? अगर ऑल जैसे ही आया तो सोचना पड़ेगा ऑल कैसे हो सकता है, सब ही चीजें जैसे कैसे हो सकती है. So it is not possible. If you talk about the first statements, okay, कि all types of UAV, this is not possible ना, कि अगर आप कहते हो कि all types कैसे होता है, कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ होगा जो वर्टिकल लैंडिंग नहीं करता होगा. ओके, तो अगर आप बात करोगे ना कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. बेसिकली नॉट ऑल UAV कैन परफॉर्म, ओके, यू कैन से कि वर्टिकल लैंडिंग. Only vertical takeoff and landing drones such as you can say na quadcopter or especially designed fixed wing hybrids can do this. So fixed wing drones, okay, which resemble small airplanes, typically require runways, okay, or launch recovery system. So first is incorrect. Second is also incorrect. All types of UAVs can do automated hovering. No, it is not possible. कुछ ना कुछ तो होगा जो automated hovering नहीं करता होगा. Okay, कि hovering requires multi you can say कि multi rotor or rotary wing configuration, and fixed wing UAV cannot hover, they need forward motion to generate lift. Okay, then after that third statement अगर बात करेंगे तो देखिएगा all motor UAV can use battery only. नहीं भाई, गैस भी करते हैं, ठीक है, उसका भी यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज हो सकता है, तो ये भी अपने आप में गलत है. ठीक है, ऑल जैसे ही आए कि सब गलत कहेंगे
कि मैनी स्मॉल यूएवी स्पेशली फॉर कमर्शियल recreational surveillance run on battery. However, not all UAV use only battery. Some use petrol, hybrid system or solar. The statement says can use battery only as power source, which is true, but for you can substantial class of UAV, not for all. So what should be the answer? Answer should be D. None is the correct answer. Should be what? D. D say Delhi. Now, in the context of electrical vehicle batteries, consider the following statements: cobalt, graphite, lithium, nickel. How many of the above usually make up battery cathodes? एक जो है आपका कैथोड्स होते हैं, एंटोड्स होते हैं, ठीक है। इन चीजों को हम लोग को ध्यान में जो है आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा कि जो आपका जो एनोड में ग्रेफाइट जो होता है, मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर देता हूँ। ये ग्रेफाइट जो होता है वो एनोड में जो है यूज होता है, एनोड। बाकी जो है कैथोड में जो है आपका यूज होता है, कोबाल्ट भी होगा, लिथियम भी होगा, निकेल भी होगा। तो इसका आंसर होगा सी ओनली 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ओनली 3। देखिएगा जो लिथियम आयन बैटरीज होता है उसके 4 मेजर कंपोनेंट्स होता है। कैथोड जिसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, एनोड जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, फिर इलेक्ट्रोसाइट एंड सेपरेटर जो है आपके होते हैं। तो इलेक्ट्रोसाइट कैरीज लिथियम आयन बैक्स एंड फोर्थ बिटवीन द एनोड एंड कैथोड वाया द सेपरेटर। And of the 4 materials, just like examine this paper, you can say now examine this paper, lithium, cobalt and nickel are used in cathode and graphite used in anode. So what should be the answer? Answer should be C. C is the correct answer. Okay, no problem, galat hoga, koi dikkat nahi hai. Now let's move ahead. Consider the following substances: ethanol, okay, nitroglycerin, urea. कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम? जो कोल गैस जो आपके गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें से कितने के प्रोडक्शन में यूज हो सकता है? ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी ऑल 3, डी नन। अगर आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम लोग बात करते, थोड़ा सा हम लोग को जो है यहाँ पे समझने की जो है जरूरत है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे जो है आपका डिबेट जो है आपका हो रहा है, ठीक है, कि इसका आंसर सी होना चाहिए या इसका आंसर बी जो है होना चाहिए ओनली 2, नहीं सॉरी, जो अगर इसका आंसर जो है 2 होना चाहिए। बहुत सारे जो आपके डिफरेंट डिफरेंट जो है क्वेश्चन जो है आपका जो है मतलब कि अगर कहे ना जो आपका जो है पूछ मतलब दिया गया है, ठीक है, जैसे कि इथेनॉल, नाइट्रो, जो आपको हम लोग बात करें ग्लिसरीन, यूरिया। तो जो कोल गैसिफिकेशन की अगर आप बात करेंगे, इसमें किस किस के प्रोडक्शन में आपका हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो कोल जो आपकी गैसिफिकेशन CO+S, उसमें हमें नहीं जाना है कि नाइट्रोग्लिसरीन जो है, while nitroglycerin itself is made by the nitrating glycerol, okay, not directly from coal, but coal gasification can provide feedstock like you can say glycerol, okay, substitute or intermediates. So according to me, you can say now कि intermediates that are precursor to nitro, okay, glycerin, the key role is indirect contribution, not direct. So according to me, answer should be okay, you can say B only 2. नाइट्रोग्लिसरीन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, इनडायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। सो इथेनॉल सही है, यूरिया सही है, लेकिन ये नाइट्रोग्लिसरीन जो है नहीं होना चाहिए। तो जो कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इथेनॉल एंड यूरिया and it can create a synthesis gas, okay, syngas, which is mixture of carbon monoxide, hydrogen and carbon dioxide, okay। थोड़ा सा इसमें आप देखेगा कि जो नाइट्रोग्लिसरीन जो है on the other hand is not produced through coal gasification and is typically derived from the organic compounds like glycerol and nitric acid, okay। So answer should be what? B only 2. This is a very easy question. What is the common characteristic of chemical substances generally known as Cl20, HMX, LLM 105, which was sometimes talked about in media? These are alternative to hydrofluorocarbon refrigerants? No. These are explosive military weapons? देखते हैं. These are high energy fuels for cruise missile? No. These are fuels for rocket propulsion? No. What should be the answer? These are explosive in military weapons. ये सब क्या है? एक्सप्लोजिव है, ठीक है, मिलिट्री जो आपके वेपन्स में जो है इसका आपका जो यूज जो है किया जाता है। सो अगर बात करेंगे कि Cl25, ओके, इसको प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत है, उसका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो उसमें देखिएगा कि जो Cl25 जो है एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, ओके, पावरफुल क्या है, नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है एंड एवर सिंथेसाइज्ड एंड इट हैज हायर, ओके, डिटोनेशन वेलोसिटी एंड प्रेशर देन HMX और RDX। सो HMX क्या होता है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव और ऑक्टोजेन कहते हैं, ठीक है।
LLM-105 क्या है, जो उसमें अगर हम लोग देखते हैं कि एक न्यूअर इन यू कैन से इंसेंसिटिव हाई एक्सप्लोजिव जो है आपको डिजाइन किया गया टू प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस विद रिड्यूस सेंसिटिविटी। ओके, ये हम लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है। सो आंसर शुड बी व्हाट, कि आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे, सो आंसर शुड बी डायरेक्टली यू कैन से बी। ओके, दीज आर एक्सप्लोजिव्स इन मिलिट्री जो है आपके वेपन्स। ओके, नाउ it is consider the following statement. It is expected that okay Majorana 1 chip will enable quantum computing science and technology का देखिएगा, हमको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन आंसर लगाना है, तो एक मैं समझ सकता हूँ ये पहला सही होना चाहिए। Majorana 1 chip has been introduced by Amazon Web Service। यहाँ पे हमने अपने आप को ही करना है, हमेशा यूपीएससी ऐसी चीजों में ट्रैप करती है, बनाता कोई है बोल देगा नहीं इसने बनाया। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज इट इज यू कैन से ना इंट्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, सो सेकंड इज इनकरेक्ट। लेट्स सपोज सेकंड इनकरेक्ट है, ये गया, ये गया, ये गया, आंसर शुड बी सी। सो डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ द मशीन लर्निंग, 110% करेक्ट। सो व्हाट शुड बी द आंसर, आंसर इज सी। अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी 1 एंड 3, बिकॉज जो मेजोरेना बेस्ड क्वांटम जो कंप्यूटिंग जो आपके रिसर्च इज प्राइमरली लेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जस्ट लाइक डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, ये सब। ठीक है, और जो Amazon Web Service does have its bracket platform for quantum computing, but it's not linked to the Majorana 1 chip. Okay, and third statement is absolutely correct. So what should be the answer? Answer should be C 1 and 3. Clear? Now let's move ahead. If you face any doubt, you can ask me. Okay. With reference to clonal antibodies often mentioned in the news, considering the following statement. ये जो है ना कुछ साल पहले जो केरला में निपाह वायरस हुआ था, तब ये न्यूज में आया था। हमारे गवर्नमेंट ने जो है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से जो है टच जो है आपका किया था इसको लेकर के। ओके, सो दैट्स वाई कि आपका जो है यूपीएससी ने ये चीजें आपको पूछा, और ये सिर्फ अपने आप में जो है सेल्फ हम लोग कहते हैं एक्सप्लेनेटरी है कि दे आर मैनमेड प्रोटीन्स, 110% करेक्ट। They stimulate immunological function due to their ability to bind to specific antigens, 100% correct. They are used in treating viral infection like that of Nipah virus, 110% correct. Okay. अगर आप बात करोगे ना कि monoclonal antibodies has been used in treating viral infection including Ebola, COVID-19, Nipah virus, and for Nipah M102.4 is a human monoclonal antibody and has been shown effective in non-human you can say like primates studies and has been used in emergency compassionate use cases. So answer should be what? D 1 2 3. Answer should be what? D 1 2 3. इसका आंसर जो है ना D होगा। ठीक है, 1 2 3 आंसर शुड बी व्हाट? D 1 2 3। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट चीजों का। देखिए यहाँ पे भी ये हाइप स्टेटमेंट वाला, अगर ऑल आ जाए, नो आ जाए, तो अपने आप में सोचना चाहिए, विल हैव टू थिंक कि दिस स्टेटमेंट शुड बी इनकरेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर। कैसे हो सकता, हजारों लाखों वायरस है, लेट सपोज कुछ ना कुछ तो सर्वाइव करेगा, ओशन में तो बहुत करते हैं, पहला इनकरेक्ट। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, कैसे कर सकता है? यूपीएससी ने इसके ऊपर 2016 या 19 में शायद पूछा हुआ भी था कि वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, कौन कौन से को वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि पीवाईक्यू इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम लोग के लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, इनकरेक्ट। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन द होस्ट सेल, इनकरेक्ट। ऐसे क्या सकता है, इतने वायरस वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। सो आंसर अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन जो इसमें पूछ क्या रहा है, which of the above statements are correct? आंसर शुड बी डी, नन। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है आपका सही नहीं है। ओके, बेसिकली वायरस सर्वाइव, ओके, एंड आर अवेंटेड इन ओशन वाटर्स। ठीक है, उसके बाद जो आप देखोगे बैक्टीरियोफेगस होता है, जिसे फेगस भी कहते हैं, वो आपका बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, वायरस जो है अपने होस्ट सेलुलर जो है वो चेंज कर सकता है। ठीक, तो आंसर जो है इसका सीधा डी होगा। मैं ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लूंगा, बट आंसर शुड बी डी। ओके, next, consider the following statement. Activated carbon is a good and an attractive tool to remove pollutants from effluent streams and to remediate contaminants from various industries. अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की आंसर इसको मैं बता ही चलता हूँ क्योंकि लंबा स्टेटमेंट है ना। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो बिल्कुल जो है हमारा सही है कि एक्टिवेटेड कार्बन जो है गुड होता है, अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला सही है। Activated carbon exhibits a large surface area and a strong potential for absorbing heavy metals, बिल्कुल ये भी, ये ऊपर वाले को ये एक्सप्लेन भी करता है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है,
Activated carbon can be easily synthesized from environmental waste with high carbon content. Of course ये भी एक्सप्लेन करता है. So directly अगर हम लोग बात करेंगे तो what should be the answer? आंसर जो है इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो आंसर जो है आपका क्या होगा कि इसका आंसर हो जाएगा ए. Both the statement 2 and 3 are correct and both of them explain statement 1. ये क्या करता है, statement 1 को जो है explain भी जो है आपका करता है. इन चीजों को हम लोग को ध्यान में जो है रखना चाहिए. देन उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो नेक्स्ट चीजों का, तो उसको हम लोग जो है देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग पहुंचते हैं. ठीक है, थोड़ा इसमें एक्सप्लेनेशन में अगर आप चाहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट आंसर जो है आप देखिए स्टेटमेंट लंबा लंबा ही है, सिर्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा कि एक्टिवेटेड कार्बन इज बेसिकली नॉन टॉक्सिक, रीजनरेबल एंड वर्क्स वाया एब्जॉर्प्शन rather than you can say now sorry adsorption rather than absorption, and it is used in industry like textile, dyeing, petroleum refining, pharmaceuticals, and its popularity is also due to the low cost and availability of raw materials from synthesis. So please keep in the mind. So activated carbon जो होता है इसे activated charcoal भी कहते हैं. ये एक highly porous होता है form of carbon with a very large surface area, जिसमें ये कहाँ से मिल सकता है, कोकोनट सेल से, वुड से, कोल से, एग्रीकल्चर के जो रेजिड्यू है उस सब से जो है आपका मिल सकता है. ठीक है, तो इतने डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है. नाउ लेट्स सी द next question. Consider the following statement. Studies indicate that carbon dioxide emission from cement industry account for more than 5% of global emission, global carbon emission. Global carbon emission. ठीक है, देखते हैं. And silica bearing clay is a mixed with the limestone while manufacturing cement. ठीक है, चलिए ये हो सकता है. Limestone is converted into lime during you can say clinker production for cement manufacturing. ये भी हो सकता है. तो देखते हैं इसका जो आंसर होगा वो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए. बोथ द स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. मेरे हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो इसका आंसर जो है कि आपका जो यही होना चाहिए. बेसिकली सीमेंट प्रोडक्शन इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन एंड एस्टिमेट टू अबाउट 7 to 8%. ठीक है, उसका पीछे जो रीजन है वो है कार्बोनेशन ऑफ लाइमस्टोन, फ्यूल कंबशन. And then in cement manufacturing जो है silica bearing clay is mixed with the limestone to provide silica, alumina, iron dioxide and essential for forming the clinker. And then limestone जो है वो आपका थर्मली डिकम्पोज होता है, तो उससे भी आपका जो कहते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स बनेगा ही बनेगा. तो इसका जो आंसर होगा ना, मेरे हिसाब से आंसर जो है इसका ए ही जो है आपका होना चाहिए. इसका आंसर जो है आपका ए होगा. प्लीज कीप इन द माइंड. ठीक है, बाकी यूपीएससी जो आंसर की डिसाइड करे, बट अकॉर्डिंग टू मी आंसर शुड बी ए. नाउ लेट्स मूव अहेड विथ रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. देखिए ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका आंसर मैं कैसे निकाल सकता हूँ. इट कैन बी यूज एज वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. इट कैन बी है, ऑफ कोर्स हो सकता है. ठीक है, देखिए ये क्या है कि इट कैन बी डायरेक्ट एयर कैप्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर आप बात करोगे ना तो आप कह सकते हो कि ये क्या है आपका कि इट कैन बी. ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही लग रहा है. सेकंड में भी इट कैन बी है. इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग. ऑफ कोर्स हो सकता है. इन एविएशन इट कैन बी, फिर से इट कैन बी है. सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल. बिल्कुल सही. तो सेलेक्ट आंसर क्या होगा हमारा सी. तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में बिल्कुल सही है. ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है. बट कीप इन द माइंड कि जो डायरेक्ट एयर कैप्चर जो है एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है. इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एट एनी लोकेशन. So it can be a valuable approach for food processing and the plastic industry by providing a source of carbon dioxide, and it can be used in various processes, potentially reducing reliance on fossil fuels, improving sustainability, and it can also contribute to net zero emission goals by removing carbon dioxide from the atmosphere and utilizing it as a feedstock for various products like these things. So according to me answer should be C, 1, 2 and 3. Answer should be what? C. Okay, now we'll have to discuss about the current affairs schemes. Current affair and schemes. So let's discuss one by one. You'll have to also participate. आप लोगों को भी कमेंट करके बताना है. Next one is India is one of the founding members of the International North-South Transport Corridor, and it is a multimodal transportation corridor which will connect first India to Central Asia to Europe via Iran,
इंडिया टू सेंट्रल एशिया वाया चाइना, चाइना का क्या लेना देना? ये कहते हैं कि हमारा जो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड बोला, जो आपका चाइना का बेल्ट ट्रेड इनिशिएटिव है उसी के अगेंस्ट में, तो चाइना का क्या लेना देना, ठीक है। और इसमें बांग्लादेश है जो हमारे साथ रिलेशन खराब कर रखा है, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सॉल्व करना हो तो इसका क्या लेना देना, ठीक है। चलिए इसको अजरबैजान के साथ भी हमारा रिलेशन, अभी की हम बात कर लेते हैं, अजरबैजान तुर्की के साथ हमारा रिलेशन है खराब अभी, ठीक है। इससे क्या लेना देना? अगर आज के समय में मुझे नहीं पता और आंसर निकालना हो तो आंसर शुड बी व्हाट, इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान, क्योंकि अभी भी जब टसल चल रहा तो ईरान जो है आपके आया था, ठीक है। अपने इंडिया में उनके जो है फॉरेन मिनिस्टर जो है आपके आए थे। तो इंटरनेशनल जो है आपका नॉर्थ, अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, तो ये जो है ना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आंसर शुड बी व्हाट, ए। सो जो आपके इंटरनेशनल अगर बात करेंगे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है एक प्रकार का मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है फ्रॉम मुंबई टू शाहिद बहिश्ते पोर्ट, जो एक चाबहार ईरान में बाई सी, फ्रॉम चाबहार टू बंदर ए अंजाली जो है, ठीक है, एक ईरानियन पोर्ट है कैस्पियन सी में, वहां पे रोड तक, फिर बंदर ए अंजाली से आपका जो अस्त्राखान कैस्पियन पोर्ट है रशिया में, वहां बाई शिप होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग भी तो देखिएगा, बाकी डिटेल मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो आंसर शुड बी व्हाट, अगर हम बात करेंगे ये 7200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, रोड होगा, शिप होगा, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये लिंक करता है इंडियन ओशन को कैस्पियन सी से वाया पर्शियन गल्फ एंड देन जो इसमें आपका रशिया और नॉर्दर्न यूरोप से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, of the two major ethanol producer in the world, Brazil and the United States of America, the former produce more ethanol than the latter. That means कि ब्राजील जो है ज्यादा प्रोड्यूस करता है अमेरिका से ethanol. Unlike the United States of America, where corn is the principal feedstock for ethanol production, sugarcane is the principal feedstock for ethanol production in Brazil. Okay, तो ये तो थोड़ा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा। चलिए इसको भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे इनकरेक्ट है, अमेरिका सबसे ज्यादा करता है, देन सेकंड पे जो है आपका ब्राजील है। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है कि अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ पे मेजे जो है वो आपका फिर अगर बात करेंगे मेन प्रोडक्शन है इथेनॉल का, ठीक है। लेकिन जो ब्राजील जो है आपका, जिसे हम शुगर केन कहते हैं ना, कि आपका चीनी का कटोरा भी ब्राजील को कहते हैं, तो शुगर केन में जो आपका मेन स्टॉक है वो है शुगर केन ब्राजील में। तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर शुड बी डी, डी से दिल्ली, आंसर शुड बी डी दिल्ली, प्लीज कीप इन द माइंड, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ओके। यहाँ पे मैंने दिया हुआ भी है, आप उसे देख भी सकते हो। देन नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, करंट अफेयर में भी था, पुराना भी था, है ना, लेकिन इसे जो है हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि सूर्य घर जो है मुफ्त बिजली योजना न्यूज में था, हम लोग को डिस्कस भी करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट कि टारगेट इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स, ओके, इन द रेजिडेंशियल सेक्टर, ठीक है, इन द रेजिडेंशियल सेक्टर, ये थोड़ा हटा दीजिएगा। देन फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो 1 करोड़ का टारगेट तो है, ऑफ कोर्स है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी व्हाट, करेक्ट, कि बेसिकली ना कि द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोमेस्टिक rooftop solar initiative, and it is transforming India's energy landscape with a bold vision to supply solar power to 1 crore household by March 2027, by March 2027. So first statement is of course correct, and the Ministry of New and Renewable Energy MNRE intends to impart training on installation, operation, maintenance and repairing of solar roof top system at a grassroots level, of course। तो अगर देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम एट ग्रासरूट लेवल, 110% करेक्ट, सेकंड स्टेज आल्सो करेक्ट। सो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग, अप स्किलिंग, अंडर स्किल कंपोनेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, 110% correct, okay, yes of course, more than 3 lakh, so we'll have to keep in the mind, okay। So to create more than 3 lakh you can say skilled manpower through fresh skilling and up skilling under scheme component of capacity building, and out of which at least 1 lakh will be solar PV you can say now technician। So answer should be what, D 1 2 and 3, answer should be D 1 2 and 3।
नेक्स्ट वन, कंसीडर द flowing statement first. Some rare earth elements are used in manufacture of flat television screens and computer monitors. Statement 2, some rare earth animals have you can say phosphorescent properties. We'll have to discuss. तो इन सारी चीजों को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लीज ध्यान में आपको रखिएगा, जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इन चीजों को भी हम लोग को जो है डिस्कस करने की जो जरूरत है। ठीक है, यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है आपका आता है। तो अगर हम देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट कहता है सम रेयर अर्थ एलिमेंट जो है यूज होता है वो फ्लैट टेलीविजन और जो आगे बात करते हैं कंप्यूटर मॉनिटर्स में, बिल्कुल सही है। क्यों यूज होता है? क्योंकि सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही। तो आंसर शुड बी व्हाट, कि अगर हम बात करें पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है, सो आंसर शुड बी ए। व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर शुड बी ए। प्लीज कीप इन द माइंड, दिस इज important. Okay, now let's move ahead and let's see the next question. So you can see here, consider the following statements. Indian Railways have prepared a national rail plan to create future ready railway system by 2028. Okay, by 2028. Okay, let's see. अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग को थोड़ा सा समझने की जो है कोशिश भी करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल अगर देखेंगे क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट करेक्ट, प्लीज ध्यान से समझिएगा, पूछ रहा है नॉट करेक्ट। ओके, तो नॉट करेक्ट में पहला अगर हम देखें 2028 तक नहीं, ये 2030 है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, कवच इज एन ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन, नो दिस इज इंडिजिनियस। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। एंड थर्ड की अगर बात करेंगे कि देखिए थर्ड में भी थोड़ा सा ना अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर थर्ड में भी जो है आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है लगता है, क्योंकि इसमें कहता है कवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID ओके टैग्स फिटेड ऑन द ट्रैक एंड स्टेशन सेक्शन। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन फुल ट्रैक पे भी इसे जो है लगाया जा सकता है। तो मैं थर्ड को करेक्ट मानता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड जो है इनकरेक्ट मानता हूँ। सो इसमें इनकरेक्ट ही पूछा है, सो आंसर शुड बी ए 1 and 2 only. Answer should be A 1 and 2 only. Okay, please keep in the mind. Now let's move ahead and let's discuss the next thing. Consider the following activities. इसके ऊपर शायद पहले भी जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। ओके, इसके ऊपर जो है पहले भी जो है आपको यूपीएससी ने जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, सो यू विल हैव टू कीप इन द माइंड। सो अगर लेट्स डिस्कस जो हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। फर्स्ट, production of crude oil, okay, refining, storage and distribution of petroleum, okay, marketing and sale of petroleum products, okay, production of natural gas, okay. How many of the above activities are regulated by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board in our country? A only 1, B only 2, C only 3, D all the 4. You will have to understand about this thing. तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि what should be the answer, तो थोड़ा सा आप ही बताइएगा। हाँ, नॉट करेक्ट दिया था ना, तभी तो मैंने इसका बताया। ये देखिए, ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो पहला इनकरेक्ट है ना, ये 2030 तक है। सेकंड स्टेटमेंट कवच जो है ऑटोमेटिक जो ट्रेन है, लेकिन ये हमारा खुद का डेवलप है, तो पहला दूसरा गलत है, तो आंसर होगा ना A1 2। ये नॉट करेक्ट है, ये सॉरी ये नॉट करेक्ट है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एवर आर नॉट करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका देखिएगा 1 and 2 कवच वाले का। नॉट करेक्ट पूछा हुआ था, सॉरी। ओके, ये नॉट करेक्ट था, तो इसलिए जो है इसका मैंने आंसर जो है आपको ये बताया है, प्लीज आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। और पेट्रोलियम वाले पे 2019 में ही जो है क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, सो थैंक यू। ओके, आई लोना रथ, थैंक यू। हाँ, इस पे ना ये क्वेश्चन जो है 2019 में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टेटमेंट वाइज था। ठीक है, कि क्वेश्चन था, आप देखिएगा कि consider the following statement. Petroleum and Natural Gas Regulatory Board is the first regulatory board set up by the Government of India. One of the tasks of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, okay, is to ensure competitive gas market. Then third, appeal against the decision of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board go before the appellate tribunals for electricity. तो पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट सही था। तो आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो था, ये आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006 से जो है आपका बना था। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। हाँ, ट्राई जो था फर्स्ट रेगुलेटर, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जो है आपका बना था। ठीक है, अच्छा,
उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा अगर बात करते हैं कि जो बोर्ड हैज ऑल्सो बीन मैंडेटेड टू रेगुलेट द रिफाइनिंग प्रोसेस, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस एक्सक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। तो वो क्या कर सकते हैं, आपको प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे जो है आते हैं, ये देखिए इसलिए बोलते हैं कि पीवाईक्यूज कितना इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कितने सारे पीवाईक्यूज है। ओके, सो प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, नो, दिस इज इनकरेक्ट। रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, बिल्कुल सही। मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही। प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, नहीं। तो आपका क्या होगा, दो नहीं होगा, तो ओनली टू जो होगा इसका आंसर। ओके, व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर शुड बी, आई कैन से कि बी ओनली टू। क्या होगा इसका आंसर? होगा ओनली टू। ओके, आई विल नॉट गो इन डिटेल, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग। Now let's move ahead. Let's see who amongst the following are the member of the jury to select the recipient of the Gandhi Peace Prize. गांधी पीस प्राइज जब मिलता है तो उसको नाम को सिलेक्ट करने के लिए कौन जो है जूरी में होता है? आंख बंद करके आंसर लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट हो ही नहीं सकते किसी भी जूरी का पार्ट। प्लीज ये ध्यान में रखिएगा। पहला हमने हटा दिया, पहला हटाया, ये गया, ये गया, हम 50-50 पे पहुंच गए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स हो सकता है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ कोर्स हो सकता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होगा तो लीडर ऑफ अपोजिशन होने का चांस जो है आपका रहता है। ठीक है, अगर लेट सपोज हमारा 2 और 4 होगा, 2 और अगर हम बात करते हैं 4 होगा, तो एक और देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा C, 2, 3 एंड 4। इसका आंसर क्या होगा? C, 2, 3 एंड 4। प्लीज कीप इन द माइंड। ठीक है, कि अगर हम लोग बात करेंगे जो आपको भी ध्यान में जो है रखना चाहिए, ठीक है, कि गांधी पीस प्राइज का जो आपके जूरी होंगे, ठीक है, उसमें आपको कौन कौन आएंगे, तो प्लीज आप लोग को भी ध्यान में रखना चाहिए कौन कौन आएंगे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, देन उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड देन लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है ये आपके आते हैं। ठीक है, प्लीज कीप इन द माइंड। सो आंसर शुड बी व्हाट? C, 2, 3 एंड 4। आंसर शुड बी C, 2, 3 एंड 4। देन नेक्स्ट वन, GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन, गगन जो हमारा डेवलप हुआ, uses a system of ground station to provide necessary augmentation, which of the following statements are correct in the respect of गगन? गगन से रिलेटेड क्या क्या सही है? It is designed to provide additional accuracy and integrity। देखिए इसमें आपको हिंट ही दिया जा रहा है, इसे डिजाइन किया गया ताकि एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी जो है आपको मिल सके। तो बिल्कुल अगर हम लोग कहेंगे, बिल्कुल पहला जो हमारा सही हो सकता है। ठीक है, इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, बिल्कुल सही हो सकता है। अब देखिए थर्ड, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन। ऊपर का अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं फर्स्ट सेकंड, ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट ओनली भी दिया तो ऑटोमेटिकली ये गलत होगा। इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कैसे नहीं हो सकता है? ट्रैफिक मैनेजमेंट में हो सकता है, बेटर जो है सेंसिटिव एरिया के लिए दिया जा सकता है। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर शुड बी D, 1 and 2। आंसर शुड बी D, 1 and 2। Okay, basically the Gagan has been developed for the aviation, but it will provide benefits to other sectors like you can say transportation, railways, surveying, maritime, highways, telecom industries and security agencies। Okay, you'll have to keep in the mind। And as you know ki you can say satellite based augmentation system implemented jointly with the Airport Authority of India, and the main objective of Gagan are to provide satellite based navigation services with accuracy and integrity required for civil aviation application and to provide better air traffic management over Indian airspace। लेकिन ये दूसरे सेक्टर में भी काम कर सकता है, मदद कर सकता है। ओके, सो व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर शुड बी D, 1 and 2। वेरी गुड। नाउ let's see the next question। Consider the following statement regarding AI action summit held in Grand, okay, पहला इज पेरिस इन फरवरी 2025। ओके, जो 2025 में जो आपका ये सबमिट हुआ है उससे रिलेटेड। फर्स्ट, को चेयर विद इंडिया। ओके, द इवेंट्स बिल्ड्स ऑन द एडवांसेस मेड एट द ब्लेसले पार्क समिट हेल्ड इन 2023 एंड द सियोल समिट हेल्ड इन 2024। ओके, बिल्कुल सही। along with the other countries US and UK, US और UK तो आपके एब्सेंट थे, साइन किए ही नहीं थे वो। ठीक है, तो दूसरा तो ऐसे ही गलत हो गया। आंसर शुड बी A, only 1। इसका जो आंसर होगा A, only 1। बेसिकली कि US and UK refused to sign Paris Summit Declaration on Inclusive AI। However, the document was backed by 60 other you can say signatories including France, China, India, Japan, Australia and Canada। Okay, ये हम लोग को ध्यान में है। अब पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। So what should be the answer? A, only 1।
Now consider the following pairs international years of the बोवेन फार्मर 2026 बिल्कुल सही। कितना इतना याद रखे, ये बाउंसर क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज रियली अ बाउंसर क्वेश्चन, ये याद रखना बड़ा मुश्किल है। वैसे इसका सारा आंसर जो ऑल द फोर है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर 2026 बिल्कुल सही, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल रिसिलिएंट टूरिज्म 2027, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 2025 है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉइड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस ये यूनाइटेड नेशन के वेबसाइट ही दिया गया है 2029। सो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सो आंसर शुड बी डी ऑल द फोर, आंसर शुड बी डी ऑल द फोर। ओके, नाउ यूपीएससी वाले कहाँ पढ़ते थे स्पोर्ट्स, इस बार भी स्पोर्ट्स के 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं खो खो वर्ल्ड कप को लेकर के इसमें जो आपका दिया है उन सारे चीज़ों को हम लोग को क्या करना है, डिस्कस जो है करना है। तो देखते हैं कि जो क्वेश्चन है, कंसीडर फ्लोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप। द इवेंट वाज हेल्ड इन दिल्ली इंडिया। अच्छा, द इवेंट वाज हेल्ड इन दिल्ली इंडिया, बिल्कुल हमारे इंडिया में हुआ था, खो खो अपने इंडिया का फेमस है ना। सो द खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो अपने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ था 13 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी 2025 के बीच में। ओके, जन आपका 2025 में, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। Indian men beat Nepal with a score of 70-80, okay, 40 in the final to become the world champion in the men category. Okay, no, Indian men's Kho team beat Nepal with a 54-36 in the final. This is 54-36. Okay, तो दूसरा incorrect. Indian women beat Nepal with a score of 36 in the final to become the world champion in the women category. Okay, अब ये उल्टा है, फीमेल ने जो बीट किया था नेपाल को वो था 1780 ओके 78-40 और ये मेल का था 54-36। ओके, सो ये दोनों उल्टा कर दिया, तो दोनों स्टेटमेंट इधर गलत, आंसर शुड बी ए ओनली वन। ओके, आंसर शुड बी ए ओनली वन। नाउ लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट इज इन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी गेम से रिलेटेड है, कोई शायद ही पढ़ा होगा, कोई पढ़ लिया होगा तो पढ़ लेगा, शायद लास्ट ईयर भी कुछ क्वेश्चन पूछा था और इस बार भी जो है क्वेश्चन आपका पूछ लिया है गेम से रिलेटेड। चलिए देखते हैं। इन द फाइनल्स ऑफ द 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन 2024 गुकेश ओके दोमाराजू बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट विनर आफ्टर डिफीटिंग द रशियन प्लेयर ओके इयान नेपो मिनाची जी। ओके, Second, Abhimanyu Mishra, an American chess player, holds the record of becoming world's youngest ever grandmaster. Which of the statement given above is correct? A only one, B only two, and then जो है आपका C both the statements are correct and D neither one nor two. ये आप लोग को भी जो है बताने की जरूरत है, प्लीज आप लोग भी जो है बताइएगा जरूर क्या होगा इसका आंसर। ओके, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन जैसे आप लोग देख रहे हो कि इस बार जो है पूछा है, ठीक है, तो दैट्स वाई कि इन चीज़ों को हम लोग को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। एंड तो आप लोग भी क्विकली जो है बता दीजिएगा कि इसका आंसर जो है क्या होगा। अगर आप लोग को पता हो थोड़ा सा गेस करिए। अगर आप पहला स्टेटमेंट देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है, कुछ लेकिन गलती है, ओके, तो आप लोग भी देखिएगा कि प्लीज जो है इसका आंसर व्हाट शुड बी द आंसर, इसका आंसर जो है क्या हो सकता है। ओके, एंड देन नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, सो अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका आंसर जो है क्या होगा तो इसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ओके, एंड तो इसका आंसर जो होगा बी जो है आपका इसका आंसर जो है होगा। ओके, एंड देन जो है डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा मैं आपको जो है डिस्कस कर लेता हूँ, बता देता हूँ। पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अभिमन्यु मिश्रा जो अमेरिकन चेस प्लेयर है वो यंगेस्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखिएगा कि जो इंडिया के जो गुकेश ओके दोमाराजू बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस चैंपियन आफ्टर डिफीटिंग द चाइना का जो है दिंग दिंग लिरेन LIREN लिरेन इन द फाइनल मैच ऑफ देयर सीरीज इन सिंगापुर। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इज बिल्कुल सही, आंसर शुड बी टू ओनली, आंसर शुड बी टू ओनली। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सारे चीजों को हम लोग को भी डिस्कस करना है, ठीक है। सो जो मिनरल्स जो सिक्योरिटी अगर पार्टनरशिप की अगर हम लोग बात करेंगे, ओके, तो इसको हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज ज्वाइन द फर्स्ट स्टेटमेंट मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। ओके, सेकंड, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 critical minerals that it has identified. Okay,
Third, the Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals Development Act 1957, empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals. देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये बताता है, हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है. ओके, बिल्कुल इंडिया ने इसे ज्वाइन किया कि इंडिया हैज ज्वाइन द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इज एट. कैसे हो सकता है? भारत में अगर सब कुछ होता है तो हम चाइना के ऊपर कैसे डिपेंड होते हैं? ओके, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आप इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ. आंसर शुड बी व्हाट? सी 1 and 3. थर्ड स्टेटमेंट इज ऑटोमेटिकली करेक्ट. Yes, of course, the Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, okay, and it empowering the central government to exclusively, okay, auction mining lease and composite license for certain critical minerals. We'll have to keep in the mind, okay. ये आप लोग को भी ध्यान में जो है रखने की जरूरत है. सो नाउ लेट्स मूव अहेड. एंड अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रिटिकल मिनरल्स वाले चीजें तो हम लोगों ने डिस्कस यहाँ पे कर ही लिया है, ठीक है. और उसके बाद जो है कुछ चीजें और भी हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं. कुछ और भी कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग जो है अभी देखेंगे, ठीक है. जस्ट अ मिनट. कुछ गोकुल मिशन का क्वेश्चन है, ठीक है. इस सबको जो है हम लोग अभी देखेंगे. यस, तो कुछ गोकुल मिशन के क्वेश्चन ये सब देख लेते हैं क्विकली. सो which of the following statement about turmeric production in India 2022-23 are true? India is the largest producer and exporter of turmeric in the world. अगर मैं आपको कहूं कि इसमें से कौन सा सही होगा तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं. उसके इसका आंसर जो आपको कुछ दिन पहले रिपोर्ट भी आया था 24 वाला, ऐसे कुछ जो डेटा था, ठीक है, उसको लेकर के तो हम लोग को जो है अभी डिस्कस जो है करना होगा, ठीक है. तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं. इसका आंसर जो है पहला देखते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड. बिल्कुल सही, एंड फर्स्ट इज करेक्ट. मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया. अपने इंडिया में आप पता ही कितना बड़ा रीजन है, तो 30 क्या कहीं ज्यादा ही ना हो जाए कि बेसिकली इंडिया कल्टिवेट्स ओवर 30 turmeric varieties including you can say Alepe, Finger, Erode and Sangli as documented by agriculture research bodies like the Indian Institute of Spice Research. Second is also correct. Third, Maharashtra, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu are major turmeric producing state in India. Of course, Gondwana land वाला अगर ऐसे देखे तो कि तेलंगाना जो है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, वो इंडिया के टॉप जो है टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जिसके अलोंग साइड आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जो है, वहां पे भी जो आपके क्या होते हैं कि टर्मरिक का जो है प्रोडक्शन आपका किया जाता है. सो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. सो आंसर शुड बी डी. डी से दिल्ली. सो आंसर इज डी. प्लीज कीप इन द माइंड. नाउ लेट्स मूव अहेड. थोड़ा सा पढ़िएगा, ये डिटेल मैंने आपको दिया हुआ है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राष्ट्रीय गोकुल मिशन. क्या है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन से रिलेटेड जो हमें चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है, एंड विल हैव टू डिस्कस. ओके, सो लेट्स सी द स्टेटमेंट कि it is important for the upliftment of rural people, rural poor, as a majority of low producing indigenous animals are with the small and marginal farmers and landless labor. देखिए इंफॉर्मेशन दे रहा है. ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट. सेकंड, अगर हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे कि इट वाज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनियस कैटल एंड बेफालो. पहला स्टेटमेंट से ही कोरिलेट कर रहा है. रियरिंग एंड कंजर्वेशन साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर. बिल्कुल करेक्ट. सो आंसर शुड बी व्हाट? सी बोथ 1 and 2. इसका आंसर जो होगा आपका क्या होगा? दोनों जो है आपका होगा कि the majority of indigenous cattle and low milk yielding animals are reared by small and marginal farmers and landless laborers in rural India. तो ये जो मिशन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसका एम्स है टू improve the productivity of these animals which is directly linked to rural livelihoods and poverty alleviation. Then statement 2 कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन was launched in 2014. अब ये मत बोलिएगा सर इतना याद रखना होता है. हाँ, कुछ इंपोर्टेंट स्कीम जो है याद रखना होता है. ओके, 2014 में लॉन्च हुआ था अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर बोविन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट. एंड इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है आपका साइंटिफिक एंड होलिस्टिक कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट जो है इंडिजिनियस ब्रीड्स ऑफ कैटल्स एंड बेफालोस का. ओके, तो थोड़ा ये आप लोग को भी ध्यान में रखना होगा. और फिर ये जो 2014 में स्टार्ट हुआ था, किसके जो डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर जो है आपका आता है. ठीक है, और ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसी में गोकुल ग्राम्स का भी कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है. सो आंसर शुड बी व्हाट? सी. आंसर इज सी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल. ओके, फुल बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स,
hydrogen fuel cycle vehicles, and this is third. And full shell electric hybrid vehicle. How many of the above are considered as alternative power train vehicles? देखिए ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर मैं आपको कहूँ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देखो इसमें क्या है, ये साइंस एंड टेक का है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अगर करना है, ठीक है, तो मैं इसे इजीली जो है मैं आपका सॉल्व जो है कर सकता हूँ कि कंसीडर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। फर्स्ट, फुल बैटरी व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल. How many of the above are considered as an alternative powertrain vehicles? So answer should be directly what? Answer is what? Answer should be what? See, and then जो है what should be the answer? Answer is C, all the three. इसका जो आंसर है ना C है all the three. ठीक है, नीति आयोग को भी ऐसा कुछ जो इसके ऊपर जो है रिपोर्ट था कि अल्टरनेटिव पावर ट्रेन में जो है आपका फुल बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आते हैं, टेस्ला है, टेस्ला का मॉडल है 3, टाटा नेक्सॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स भी जो है आपके आता है जिसमें टोयोटा का मिराई है, ह्यूंडई का नेक्सो है, देन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड व्हीकल्स भी जो है आपके आते हैं। सो अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका क्या होगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑल द थ्री. ओके, then which one of the following launched the nature solution finance hub for Asia and Pacific? इसमें से किसने जो है नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक जो है आपका लॉन्च किया है? दिस इज रियली वेरी इजी क्वेश्चन, अगर मैं आपको कहूं तो सच्ची में ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप लोग भी अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, ए, द एशियन डेवलपमेंट बैंक. सो जो नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक जो है वो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है लॉन्च किया है. सो नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब जो है फॉर एशिया एंड द पैसिफिक एक इनिशिएटिव है जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है एट COP 28. ओके, कहाँ पे, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 इन 2023 जो है लॉन्च किया है दिसंबर 2023. इसका जो प्राइमरी गोल है इज टू मोबिलाइज एट least $2 billion in investment by 2030 to support nature-based solution that address climate change, biodiversity loss, and environmental degradation across the region. Please keep in the mind. Okay. Now let's move ahead and let's see the next question. We already discussed about this thing. Okay, Rajaram Mohan Roy non-cooperation movement. This thing. Okay. So I hope so कि this analysis will be really very helpful for you, and if you face any hurdle challenges, okay, so you can comment, you can reach us, also you can fill the inquiry form and it will be very helpful for you. Okay, so just a minute, be online, then our Kanaya sir will start the geography environment analysis, so that will be really very helpful for you. So just a minute, be online. Okay, just a minute. So thank you so much, and I hope so this analysis will be really very helpful for you, and just give you 100%. Okay, and I already told you if you are able to fetch 80% marks, okay, 80% 80 or 80 plus, then please try to give time for your mains preparation, and if there will be need you can reach us. So thank you so much, all the best, may God bless you. Hello. Welcome everyone. I think I'm online and you can see me. So I'm hoping you all have performed extraordinary during your prelims examination. And I'm hoping you all will
you all will. Very hopeful to cover this. तो इस सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे एंड आई थिंक यू ऑल हैव चेक योर परफॉर्मेंस विथ प्रभाकर सर एंड शंकर सर, रिस्पेक्टफुल शंकर सर. So I will here discuss the remaining part of today's syllabus, and that is mainly our geography, environment, and ecology. You know, this year, as far as UPSC is concerned, so UPSC has avoided the questions from Indian geography, and that is quite unusual, we can say. दैट इज काइंड ऑफ थिंग. तो अभी बहुत दिनों बाद यूपीएससी ने देखा हम लोगों ने कि यूपीएससी ने बहुत दिनों के बाद अपने पैटर्न को चेंज किया, पर्टिकुलरली इन ज्योग्राफी, यू नो वेरी वेल. और आई एम सेइंग कि माय वीडियो इज क्वाइट ब्लर बिकॉज आई एम रिमोटली located at present. I am here in Itanagar. So that little bit audio visual issue you may face. तो चलो हम लोग शुरू करते हैं. और आई एम होपिंग कि यू ऑल हैव डिड वेरी वेल, परफॉर्म वेरी वेल. तो मिलाते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आए हैं. तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर आई विल टेक, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, लेट मी, that is United Kingdom, Denmark, New Zealand, Australia, and Brazil. So the question is that which above country have more than 4 time zones? 4 time zones किसका है? तो you know very well time zones are the area. Sound not clear sir. हाँ मीनाक्षी, एक्चुअली मैं थोड़ा रिमोट में हूँ इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है. यहाँ नेटवर्क की थोड़ी सी इश्यू रहती है, दैट इज वाई आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन. सो ठीक है. तो देखो यहाँ क्या है, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील. आप जानते हो देखो ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं, बट इनके जो टेरिटरीज हैं फॉर देयर कॉलोनीज बहुत समय तक रहे. आज भी इनका जो पूरा एरिया है वो बहुत जगहों पर लोकेटेड रहता है. तो दैट इज वाई एक्चुअली इनके जो टाइम जोन्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं. जैसे यूनाइटेड किंगडम है तो इनका अगर टाइम जोन यूनाइटेड किंगडम का लेंगे तो इसके पास 9 टाइम जोन दिखते हैं. डेनमार्क को लेंगे तो इसके पास भी 5 टाइम जोन है. यू नो वेरी वेल कि ग्रीनलैंड इज स्टिल पार्ट ऑफ जयदेव. तो साउंड क्लियर है? ठीक है. थोड़ा सा साउंड का एक्चुअली रिमोटली लोकेटेड है अदरवाइज. जबकि ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, तो यहाँ पर इसका आंसर ओनली 4 है. रीजन बीइंग कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मोर देन 4 टाइम जोन. ज्योग्राफी के जब स्टार्टिंग क्लास होते हैं उसी समय टाइम जोन्स के डिस्कशन होते हैं. टाइम जोन रिफर्स द एरिया प्रैक्टिसिंग द इक्वल फॉर देयर स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस. जिनका स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करना होता है, मान लो हमारे गवर्नमेंट के ऑपरेशंस हैं तो वी हैव अनाउंस, इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस दैट कि वी प्रैक्टिस ओनली 1 टाइम जोन. तो सिमिलरली अलग अलग देशों का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अलग अलग होता है. तो आप देखो जैसे ये पूरा टाइम जोन का एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है. दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा होता है. फॉर एग्जांपल ये रसिया प्रैक्टिसिंग अबाउट 11 टाइम जोन. उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम, डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉल कंट्री, द एरिया ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज स्कैटर्ड ट्रूली. ये बहुत दुनिया में फैला हुआ है. आज भी इसके जो कॉलोनीज या इसके जो टेरिटरीज हैं, यू कैन सी फॉकलैंड इज द टेरिटरी. रिसेंटली डिएगो गार्सिया वाज इन न्यूज एंड इट इज स्टिल अ टेरिटरी. तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बनेगा जो है केवल 4, ओनली 4. एंड यूनाइटेड किंगडम पोजेस 9 टाइम जोन, डेनमार्क 5, न्यूजीलैंड 5, ऑस्ट्रेलिया 9. एज फार एज ब्राजील इज कंसर्न, तो डिस्पाइट अ लार्जर एरिया इट हैज ओनली 4 टाइम जोन. और क्वेश्चन बहुत क्लियर था कि किसके पास ज्यादा टाइम जोन है. तो ज्यादा टाइम जोन तो नहीं है, मोर देन का जैसे ही कंसर्न आया तो ब्राजील विल बी द इनकरेक्ट. तो आंसर विल बी बी. आते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हियर, दैट इज
related with the country and resources. You know very well, UPSC is very concerned about the resource distribution. Even during past year, we have seen such a question upon the resources. So that is not a न्यू क्वेश्चन. आप जानते हो लिथियम ट्रायंगल से पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं और रिसेंटली यू हैव सीन इवन रीड मोस्ट प्रोबेबली आपने पढ़ा होगा कि डायमंड का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, सैंपल है, दैट इज अबाउट हाफ अ केजी वाज डिस्कवर्ड इन बोत्सवाना. तो बहुत बड़ा हुआ है वहां पे निकेल. एज फार एज निकेल इज कंसर्न तो इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट निकल प्रोड्यूसर इन द world. So the fact is that here all three are correctly matched and that is why the answer will be C. Okay, तो इसका आंसर हमारा C निकलेगा. And here the distribution of all such resources. The data says Indonesia is on top in nickel production while Chile, Argentina and Bolivia all comes under the जो लिथियम ट्रायंगल है. ठीक है, इसी तरह से हमारा जो बोत्सवाना है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन द वर्ल्ड. तो इस तरह से इसका भी आंसर हम लोग सी कवर कर रहे थे. अब और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगेन हियर द क्वेश्चन हैव टेकन बाय यूपीएससी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इसके पहले भी हम देखते हैं कि सर्डिनिया पे क्वेश्चन बन चुका है, नॉर्मैंडी पे क्वेश्चन बन चुका है एंड मैलोरका, इस पर भी क्वेश्चंस, इस पे नहीं, दैट टेकन बाय यूपीएससी, तो इस पे क्वेश्चंस रहे हैं. मैलोरका एक्चुअली न्यू साइट नहीं है. मैलोरका को पहले भी इन्होंने बेलियारिक आइलैंड के फॉर्म में लिया हुआ है. तो दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम द वर्ल्ड मैपिंग सेक्शन. यू नो वर्ल्ड मैपिंग प्ले अ वाइटल रोल. प्रीलिम्स में इस बार तो 4-5 ही दिखे हैं, यूजुअली वहां से 8-10 क्वेश्चन आते हैं. तो देखो, सर्डिनिया एंड कोर्सिका बोथ आर द आइलैंड ऑफ मेडिटेरेनियन. कोर्सिका बिलोंग्स टू फ्रांस while सर्डिनिया बिलोंग्स टू इटली. तो इस तरह से यहां पर जो लास्ट है ये गलत होगा. नॉर्मैंडी इज द पार्ट ऑफ फ्रांस, सो इट इज नॉट विथ स्पेन, ये भी गलत होगा. जबकि मैलोरका इज नॉट पार्ट ऑफ इटली, रेदर इट इज पार्ट ऑफ आवर स्पेन. सो यहां पर ये तीनों के तीनों इनकरेक्टली मैच हैं एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी डी, नन ऑफ द एबव. यहां पर तो ये सारा लोकेशन मैंने कलेक्ट किया था कि दिस इज द लोकेशन ऑफ आवर नॉर्मैंडी, और यहाँ पे आप देखो तो दैट इज द लोकेशन ऑफ सर्डिनिया एंड सर्डिनिया बिलोंग्स टू इटली. जबकि मैलोरका, यहाँ पे आप सीधा देखो, बेलियारिक आइलैंड का पार्ट है. अर्लियर बेलियारिक आइलैंड वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी दिस ईयर, द स्मॉल आइलैंड आउट ऑफ दैट आस्क. तो ये क्वेश्चन बनते रहते हैं, दैट इज नॉट वेरी कहो तो उसी तरह से क्वेश्चन हम लोग एज्यूम कर सकते हैं जैसा हर बार यूपीएससी करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक वांट दैट इंडिया कुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस वेयर वेट वर्ल्ड टेम्परेचर. ये नया टर्म यूज हुआ है यूपीएससी के क्वेश्चंस में, हालांकि ये न्यूज में रहता है. routinely exceed 35 डिग्री सेल्सियस. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज वेट वर्ल्ड टेम्परेचर. देखो, वेट बल्ब का सीधा सा मतलब है थर्मोमीटर. थर्मोमीटर को हम लोग कोल्ड रीजन में, मतलब कहीं पे इसको कवर्ड एरिया में रखते हैं और वी आर मेजरिंग द टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर. तो उस कंडीशंस को वेट बल्ब टेम्परेचर कहा जाता है. और ऐसे कंडीशंस में अगर टेम्परेचर राइज करता है तो दैट इज क्वाइट द सीवियर कंडीशन, क्योंकि वाटर वेपर ज्यादा होने से जो पूरा एरिया होगा दैट विल बी क्वाइट अनकंफर्टेबल. तो अनकंफर्टेबल एरिया होगा. और ऐसे कंडीशंस में क्या हो सकता है, देखो वेट कंडीशन में मतलब जब मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो और उस समय गर्मी ज्यादा रिकॉर्ड की जाती है तो स्वेटिंग बहुत होती है. लेकिन सच अ स्वेटिंग डू नॉट ड्राई अप, वो सूखता नहीं है. तो फिर और सारे प्रॉब्लम्स हैं, बॉडी का हीट रेगुलेट नहीं होता है. तो इससे ह्यूमंस अफेक्ट हो जाएंगे. कुल मिला के हमें हीट स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे. But as far as cyclone and drought is concerned, so that is not directly related with this phenomena. देखो, cyclone, as far as tropical cyclone is concerned, तो tropical cyclone is the phenomenon of tropical ocean. ये हमेशा tropical ocean में ही बनता है. और यहाँ पे बात हो रही है कॉन्टिनेंट की. तो obviously the option 1 will be incorrect and only 2 will be correct here. So that is the answer of
दिस। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? यहां पे हम लोगों ने इसको देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हाँ, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल। रेनफॉल, आर्टिफिशियल रेनफॉल कैसे होता है? देखो, आर्टिफिशियल रेनफॉल इज द वे फॉर क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग जब हम लोग करते हैं तो उस समय में क्लाउड के ऊपर में या तो एरोप्लेन थ्रो करता है बहुत सारे मिनरल्स को, या फिर हम देखते हैं कि नीचे से ब्लास्ट फेंक कर वहां पर क्लाउड के टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाता है। और ट्रेडिशनल वे फॉर क्लाउड सीडिंग इज सिल्वर नाइट्रेट। यू कैन आंसर ऑल्सो, जिसको समझ में आ रहा है, ये तो बहुत पहले भी आ चुका है। मीनाक्षी, हर प्रसाद, अब बताओ। ए नहीं है, हाँ सॉरी, ए है सिल्वर आयोडाइड एंड पोटासियम आयोडाइड। यस, इट इज करेक्ट, ए ही इसका आंसर है, और ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस आर्टिफिशियल रेनफॉल और क्लाउड सीडिंग। तो ये बहुत पुरानी प्रोसेस है और अभी रिसेंटली भी न्यूज में आया है, कुछ कंट्रीज ने इस पर अभी स्टेप भी लिए हैं। यहाँ पे यू कैन सी सिल्वर आयोडाइड एंड पोटासियम आयोडाइड। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज, which organization has enacted the nature restoration law NRL to tackle climate change and biodiversity loss? आप भी बता सकते हो इसको कि देखो, अभी ये एक बहुत वेलकमिंग स्टेप है दैट हैज बीन टेकन बाय, हाँ इसका बिल्कुल सही, यूरोपियन यूनियन है। तो यूरोपियन यूनियन हैज डिसाइडेड वी शैल रिड्यूस द ओवरऑल carbon dioxide emission and we promote the sustainable development way by the year 2013 to 2030। तो 2030 मतलब 2030 तक यूरोपीय यूनियन चाह रहा है कि आने वाले समय में हम लोग इस तरह से एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करें और अपने ग्रुप में इन चीजों को इस तरह से बढ़ाएं कि आने वाले समय में हमारा पूरा इकोसिस्टम बहुत वेल बैलेंस्ड हो जाए। तो दैट इज द इफोर्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब आप चलते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज, अगला क्वेश्चन है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, next question here is, next question, in India income from allied activities like poultry farming, wool rearing in rural area is exempted from any taxes। कुछ लिमिट तक, ये तो वैसे इकोनॉमी का क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। In rural area, agriculture land is not considered as capital asset under the provision of Income Tax Act 1961। देखो, एसेट्स तो बिल्कुल इसको कवर किया जाएगा। एसेट्स तो एक्चुअली यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर प्रॉपर डी है, एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, रीजन बीइंग अलाइड एक्टिविटी इज कंसीडर्ड अ बिजनेस सो दैट इट इज अ टैक्स, व्हाइल कुछ चीजों को छोड़ा गया है एग्रीकल्चर लैंड को। तो इसका आंसर डी है। आते हैं हम लोग ज्योग्राफी के पीओ क्वेश्चन पर। अगेन दैट इज फ्रॉम द ज्योग्राफी मैपिंग। हियर consider the following countries: Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador and so on। I think आप में से सब लोगों ने इसका आंसर लगाया होगा सही। बोलीविया, ब्राजील, इक्वाडोर, which among the Andes mountain passes through how many of the above country? तो देखो, you know Andes mountain was the question of last year paper as well। पिछले साल भी क्वेश्चन बना है Andes mountain से, आपने देखा होगा। और Andes mountain is one longest mountain that passes through about 7 countries। और सारे कंट्रीज का अगर लिस्ट देखो तो यहाँ से वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, दिस इज द range of our Andes mountain। But you can see Paraguay and Brazil is not coming under the spread of our the Andes mountain। तो यहाँ पर Andes mountain के स्ट्रेच को जब देखेंगे तो we shall always keep in mind the locations of our this region। ठीक है, तो वहां से ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मैपिंग में अक्सर होता है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब आते हैं कंसीडर द फॉलोइंग वाटर बॉडी।
फिर से ये मैपिंग पर क्वेश्चन बना है और यू कैन सी लेक टंगानिका, टोनल सिप। लेक टंगानिका दुनिया की जो है लॉन्गेस्ट लेक है, दैट इज लोकेटेड इन आवर अफ्रीका इन रिफ्ट वैली एंड इट होल्ड्स द सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वर्ल्ड आफ्टर द Baikal Lake. Tonal Sip is the lake of Southeast Asia, one of the largest. और Patos Lagoon is the largest lagoon lake of our the D none. Very good, Harprasad, very good. इनमें से किसी भी लेक से हमारा इक्वेटर पास नहीं होता है. दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यस, दैट इज ग्रेट. और इसमें से किसी से भी अगर वर्ल्ड मैप तो देखो तो दैट इज द स्प्रेड ऑफ इक्वेटर. और यहाँ पे ये अपना टंगानिका लेक आएगा, यहाँ पर पैटोस लेक है, टोनल सिप यहाँ पर दिखता है, और एक और लेक है तो वो भी कहीं और ही है, इसमें वो नहीं दिखता है. सो दैट आंसर इज डी. चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. ये तो ज्योग्राफी के बिल्कुल बेसिक से आ गया है. दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंस ऑफ द फेनोमेना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. यू नो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वेगनर इन द ईयर 1912. सो ही कलेक्टेड एविडेंस इन फेवर ऑफ. एफ तो ऑप्शन ही नहीं होता है. चलो आते हैं. द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक from Brazil coast matches with those of Western Africa. Gold deposit of Ghana are derived from Brazil plateau when the two continents lay side by side. Gondwana system of sediment from India is known to have its counterpart in 6 different land masses in southern hemisphere. So what would be the correct answer? 1, 2, 3. Yes, exactly, Harprasad. That is the 1, 2, 3. इन्होंने जिक्सॉ फिट का कॉन्सेप्ट रखा, दैट इज दिस. और यू कैन सी देयर इज अ इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स. सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं इफ वी रिफिट टुगेदर ऑल सच कॉन्टिनेंट. और यहाँ पर जो घाना के गोल्ड बियरिंग रॉक्स हैं, या घाना में जो प्लेसर डिपॉजिट मिलते हैं, दे डिराइव्ड फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ ब्राजील. रॉक यहाँ पे है और वही पहले चले गए थे उधर फ्लोट करके. और अगर हम इंडिया को देखें तो हमारे यहाँ पे जो गोंडवाना का पार्ट है, दीज आर द पार्ट ऑफ गोंडवाना. सो एग्जैक्टली द आंसर विल बी सी. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है. द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर इन मोर is more in subtropical and temperate area than in equatorial and polar region. So is it true? Exactly, it is true. रीजन बीइंग कि देखो पोलार रीजन में डस्ट बनता ही नहीं है, पहले तो इसी को समझें. बिकॉज पोलार रीजन एक्सपीरियंसेस फ्रीजिड क्लाइमेट, मींस वेरी कोल्ड throughout the year. Snow covered land do not produces the dust particle, while equatorial region experiences excess amount of rainfall out of the cumulonimbus cloud. तो यहाँ भी कम बनते हैं, यहाँ भी कम है. इक्वाटोरियल में तो ग्रीनरी इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर डस्ट का स्कोप ही कम हो जा रहा है. अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट की ओर. सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट लेस ड्राई विंड, लेस ड्राई विंड. अब यहाँ ड्राई विंड का क्या कॉन्सेप्ट है? ड्राई विंड रेफर्स द विंड विदाउट मॉइस्चर. तो अगर हम लोग सब ट्रॉपिकल को देखते हैं, द एरिया लाइज बिटवीन द सब ट्रॉपिकल मींस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास जो एरिया आ रहा है 20 to 30 डिग्री के आसपास. तो यू नो 20 to 30 डिग्री एरिया इज ऑक्युपाइड बाय द वास्ट डिजर्ट्स. यहीं पे तो सारे डिजर्ट हैं. तो ऑप्शन बी जो है, स्टेटमेंट बी, दैट मस्ट नॉट बी करेक्ट. रीजन बीइंग डिजर्ट आर द होम ऑफ द डस्ट पार्टिकल. तो यहां पर स्टेटमेंट 2 रॉन्ग होगा, स्टेटमेंट 1 सही होगा. सो दैट इज व्हाई हरप्रसाद एंड मीनाक्षी यू बोथ हैव डिड द राइट आंसर. और यहां पर आप देखो तो साहेल रीजन जो पिछली बार भी क्वेश्चन बना था, साहेल रीजन इज नोन फॉर सच अ वायलेंट डस्ट. हर साल यहाँ पे डस्ट आते हैं और दैट इज द कंडीशन. अब फिर से लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन जनवरी in northern hemisphere the isotherm band equator band
in northern hemisphere isotherm band equatorward while crossing the landmass and poleward while crossing the ocean. इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जब लैंड का कंडीशन होगा तो कुछ इस तरह से बैंडिंग होगी आइसोथर्म में, और जब ओशियन आएगा तो वो नॉर्थ की ओर ऐसे बैंड करेगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है दैट इज नॉट न्यू, लास्ट ईयर द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी। अब यहां पे दूसरा स्टेटमेंट क्वाइट ट्रिकी है। इन जनवरी द एयर ओवर द ओशियन इज वार्मर देन the land mass in northern hemisphere. Is it right or wrong? तो it is very true, दोनों सही है। देखो होता ये है कि जब हम ओशियन के पार्ट पर बात करते हैं तो ड्यूरिंग जनवरी द ओशियन currents brings warm air up to 60 or 70 degree north latitude while land masses are come under the influence of कोल्ड पोलार विंड। तो बहुत ठंडी हवाएं यहां पे चलने लगती हैं एंड दैट इज व्हाई द आइसोथर्म डेविएट्स लाइक दिस। ये डेविएशन जो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ वार्म एयर ब्रॉट बाय द वार्म करंट, और ये जो डेविएशन लैंड पे दिख रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द पोलार विंड ब्रॉट बाय द पोलार करंट। तो इसीलिए पोलार विंड का पूरा एरिया कोल्ड हो गया जबकि हमारा इधर वाला एरिया वार्म रहा। तो द बैंड ऑफ आइसोथर्म इज गाइडेड बाय द एटमॉस्फेरिक फैक्टर, दैट इज क्वाइट इजी टू कॉम्प्रिहेंड। अब आते हैं यहाँ पे रॉक के बारे में क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट नहीं रहे हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत आसान से आए हैं। वी मे से दैट इन कॉन्टेक्स्ट टू इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक, चॉक is known as very permeable rock। permeable का मतलब क्या होता है? ऐसा रॉक जिससे पानी फ्लो कर जाए, दैट इज permeable। यहां से पानी अगर ड्रेन करेंगे तो वाटर में ड्रेन आउट ऑफ द रॉक, दैट इज कॉल्ड permeable rock, whereas clay is known as quite an unpermeable, impermeable और least permeable। तो देखो दोनों के मॉलिक्यूल्स में अंतर है। जो इसका मॉलिक्यूल्स होता है चॉक का, वो चॉक के थोड़े से सैंडी मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कोर्स पार्टिकल इज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ चॉक, while clay is composed of very fine particle, that is why such type of differences prevails। अब चॉक is porous and hence can absorb water। भाई जब पोरस है तो एब्जॉर्ब कैसे करेगा? पोरस है तो एब्जॉर्ब कैसे करेगा? तो पोरस के साथ तो दिक्कत होती है, ड्रेन कर जाएगा। लेकिन हाँ, इसके साथ क्या है, इसका जो मटेरियल होता है ये ड्राई होता है। तो इस ड्राई में बहुत सारा, आप चॉक को डुबाएंगे भी तो ये देखेंगे कि यहां पर ये मटेरियल को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो चॉक एब्जॉर्ब, चॉक जो है पोरस होता है और वो वाटर को जाने देता है, लेकिन उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि क्ले इट्स नॉट ऑल पोरस। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका आंसर ए होगा, दैट इज बोथ 2 and 3 आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट ए। ठीक है, इसको यहां पे थोड़ा देख लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 69। विदाउट एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन अर्थ सरफेस। दैट इज वेरी ट्रू। अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमारा टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा एंड it must be -18 degree। Heat absorbed and trapped by atmosphere maintain our planet average temperature, that is called greenhouse effect। हाँ, इसका आंसर हमारा सी आ जाएगा। और एटमॉस्फेयर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पार्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। तो इसका आंसर यस एग्जैक्टली मीनाक्षी, दैट इज द सी ऑप्शन। तो इसके तीनों सही होंगे अगर हमारा एटमॉस्फेयर और इस तरह के ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होते। इन दैट केस वी वुड हैव द सेम कंडीशन फेल्ट बाय द मरकरी। जैसे मरकरी पर गैसेस नहीं होने के कारण उसके नाइट का टेम्परेचर माइनस में -300 तक जाता है अप्रॉक्स, उसी तरह हमारे अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री हो जाता है। तो दैट इज बाय ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। Now, consider the following: cigarette butts, eyeglasses, and car tire. How many of them contains plastic? तो इसका आंसर तो हमको लग रहा है सबको पता है।
लेट मी नो एज पर योर व्यू कि आखिर इसका क्या आंसर होगा। सिगरेट बर्ड्स, आई ग्लासेस, लेंस, कार टायर में तो प्लास्टिक होता ही होता है। आपके आई ग्लास के जो लेंस है आजकल वो प्लास्टिक के बनने ही लगे हैं, और सिगरेट बर्ड्स में भी जो होते हैं वो प्लास्टिक होते हैं। तो इस इन दिस वे द करेक्ट आंसर विल बी ऑल 3C। ठीक है, चलो तो इसका आंसर होगा C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों में सिगरेट बर्ड्स में भी वो होता है। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगरेट बर्ड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन वाला है क्वेश्चन। तो दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 28th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इंडिया refrained from signing declaration on climate and health। इसका क्या आंसर आ रहा है? क्लाइमेट और हेल्थ। एंड COP28 declaration on climate and health is binding declaration, and if signed it becomes mandatory to decarbonize health sector. If India health sector is decarbonized, the resilience of the healthcare system may compromise। तो देखो यहां पर जो इसका आंसर आ रहा है कि 28th में हमने, ये बात तो ठीक था कि हमने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इसके स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी है। डिक्लेरेशन क्लेम हेल्थ इज बाइंडिंग डिक्लेरेशन, तो क्लाइमेट एंड हेल्थ यहाँ पे बाइंडिंग नहीं था, दैट इज क्वाइट ऑप्शनल, ये ऑप्शनल था। और अगर ऐसा बाइंडिंग होता तो फिर तो बड़ी दिक्कत आती। तो हमने यहाँ पे बाइंडिंग वाले ऑप्शंस देखे हैं जो कि रॉन्ग है, और अगर हम लोग हेल्थ सेक्टर को डीकार्बोनाइज कर भी देते हैं तो दूसरे ऑप्शंस हैं दैट मे प्रोटेक्ट आवर हेल्थ सेक्टर, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर सी बनेगा। हाँ, इसका आंसर भी सी बनता है, दैट इज द सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 93। Scientific, consider the following statement. Scientific studies suggest that a shift is taking place in Earth rotation and axis। Recall the concept of Milankovitch cycle। जब Milankovitch cycle आया तो Milankovitch suggested that yes, there is the eccentricity, there is the obliquity। तो ये सारे हो रहे हैं, अर्थ का रोटेशन और एक्सिस चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल कॉजेस, बहुत सारे कारण हैं। अब आते हैं कारण में क्या है। सोलर फ्लेयर एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इंजेक्शन bombarded the earth outer atmosphere with tremendous amount of energy। ठीक है, ऐसा होता है, but that do not causes the change in axis or the rotation। अगेन थर्ड है कि एज अर्थ जो सोलर फ्लेयर होते हैं, तो सोलर फ्लेयर भी हमारा देखो जो हमारा मैग्नेटोस्फीयर है वहां पर वर्क करता है सोलर फ्लेयर, और मैग्नेटोस्फीयर में अगर हमने कोई सैटेलाइट वगैरह लगा रखे हैं, इन दैट केस सोलर फ्लेयर डिस्टर्ब्स दैट सैटेलाइट। तो सोलर फ्लेयर हैज नो great impact on rotation or axial tilt। Again, as Earth polar ice melt, water tends to move toward equator। Yes, it is true. That is the reason why cold current is flowing from the pole। तो दोनों तो सही लग रहे हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, so that इसके एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, एक्सप्लेनेशन में दिक्कत है। और बोथ 2 and 3 आर करेक्ट, बट बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन। जो हमारा बी आ रहा है, बी ऑप्शन बनेगा, आर करेक्ट बट ओनली वन। तो हमारा स्टेटमेंट का इसका बी आएगा ऑप्शन, क्योंकि इसका हाँ बी बनेगा, इसका बी बनेगा क्योंकि इसका ऑप्शन जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस अग्रीमेंट इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। 6 ऑफ पेरिस क्लाइमेट सेट आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट। अगेन नेक्स्ट इज आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस अग्रीमेंट इंटेंडेड टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजी। तो इसका जो पूरा कंसर्न है वो पेरिस अग्रीमेंट से है, और अगर इसको देखें तो पेरिस का जो पूरा आया था, इसका आंसर वैसे सी होगा। पहले तो इसको मार्क कर लेते हैं, फिर समझ लेंगे। आंसर सी होगा। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट,
और यहाँ पर कार्बन मार्केट को ही ये जो है रेगुलेट करने के लिए आया था और कार्बन क्रेडिट की ये पूरी बात करता है। दैट इज व्हाई दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पीकॉक टेरेंटुला, गूटी टेरेंटुला। देखो पीकॉक टेरेंटुला एक बहुत क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो आंध्र प्रदेश के गूटी में मिलता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड गूटी टेरेंटुला। और इट इज एन ओमनिवर्स क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन ये नहीं है, क्रस्टेशियन के जो कवर होते हैं वो है ये तो एक तरह का जो है वो एक तरह का टेरेंटुला है। टेरेंटुला बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, इसकी फैमिली अलग है, ये मकड़े वाली फैमिली की होती है। क्रिस्टेशियस फैमिली में हमारा जो है वो केकड़ा होता है। तो केकड़ा टाइप ऑफ स्पीसीज इट इज नॉट, रेदर इट इज डिफरेंट स्पीसीज। इसका केवल हैबिटाट इंडिया में ही मिलता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकेंड इज ट्रू। और केवल इंडिया में है बिकॉज ऑफ इलीगल ट्रेड। नाउ देयर नंबर्स, देयर इंडिविजुअल आर वेरी लेस। जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ओवर द टाइम डिक्लाइंड एनफ। और इट इज इन नेचुरल हैबिटाट, इन इट्स नेचुरल हैबिटाट इट इज एन आर्बोरियल। हाँ तो ये सही है, देखो नेचुरल हैबिटाट में आर्बोरियल होता है, लेकिन अगर वैसे इसको पेट की तरह पालते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि इसको जमीन पे भी रखते हैं। तो इसके 2 और 3 सही होंगे। डी विल बी द करेक्ट आंसर। यस एग्जैक्टली डी होगा इसका आंसर, टेरेंटुला वाला डी। अब आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया is less than 0.5 ton carbon dioxide per capita. In terms of carbon dioxide from fluid combustion, India ranks second in Asia Pacific. Electricity and heat producers are the largest source of carbon emission. तो इस क्वेश्चन का पहले आंसर बताओ, आप लोग ट्राई करो क्या आंसर इसका बन सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड पे इस बार तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पे इस बार इन्होंने इतने क्वेश्चन पूछे हैं, 3-4 क्वेश्चन सीधे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड पे बनते चले गए। तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी यूपीएससी हैज चेंज दिस ईयर। हाँ लेकिन ये है कि इस तरह की फ्रीक्वेंसी अगली बार दिखाई नहीं पड़ सकती है। तो हाँ इसका आंसर है सी 2 और 3 ओनली। कैसे 2 और 3? तो लेट अस डिस्कस कि देखो इंडिया कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा इज 1.89 टन, दैट इज अबाउट 2 टन। तो इसका आंसर सी होगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी हीट का सही चल रहा है, जबकि इंडिया एशिया पैसिफिक में सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर है। यू नो द साइज ऑफ इंडिया बहुत बड़ा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? तो यहां पर इन्होंने एग्रीकल्चर से टच किया है, जो अनयूजुअल क्वेश्चन है, जैसे कसावा, जिंजर, मालाबार स्पिंच, मिंट और पपाया। तो यहाँ वुडी सर्ब, हर्बेथ, स्यूडो सिस्टम और उसके बाद हर्बेशियस, क्लिम्बर, एनुअल सर्ब, वुडी सर्ब, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, दैट इज बी ओनली 3, और फिर इसको डिटेल करते हैं। ये सब अनयूजुअल क्वेश्चन है, जैसे कसावा, जिंजर और मालाबार जो है ये सही मैच है। मिंट जो पेरेनियल हर्ब है, और पपाया एक तो ये तो बड़ा सा होता है, ये भी एक तरह का हर्ब ही है। तो इसका आंसर बी होगा, इसको करेक्ट कर लेंगे। अब रेफरेंस टू प्लैनेट अर्थ कंसीडर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस्ड बाय ओशियन, ये तो हमने सही किया होगा बहुत लोगों ने। मैराइन प्लैंक्टन फाइटोसिंथेटिक बैक्टीरिया produces about 50% of world oxygen. Well oxygenated surface water contains several fold higher oxygen than that in atmospheric air. Which of the statement given above is or are correct? इसका लगाओ। इसका आंसर है हमारा, देखो हमारे ओशियन का अगर हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो ओशियन इज क्वाइट डायनामिक। ओशियन का अगर हम लोग देखें तो ओशियन में जो हमारा प्रोडक्शन है ऑक्सीजन का, दैट इज मोर फ्रॉम द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट तो एरिया भी लिमिटेड है, लेकिन ऑक्सीजन यू नो कवर्स द वास्ट एरिया ऑफ लैंड, तो बहुत ज्यादा है। दूसरा, प्लांट फाइटो प्लैंक्टन का अगर रोल देखें तो यस दैट इज ट्रू, 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय सच अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
जबकि ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेंट सेवरल फोल्ड हायर ऑक्सीजन देन एटमॉस्फेरिक एयर। तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारा जो सरफेस वाटर, इसका मतलब रिवर और लेक, रिवर का जो पानी है वो कम है वहां पर। मेन पानी हमको दिखता है ओशियन में, उसके बाद जो है दूसरा दिखा हमारा पोलर आइस कैप में, और फिर सो ऑन। तो इसीलिए इसका ऑप्शन है हमारा बी ओनली टू, बी ओनली टू। ठीक है, चलो आते हैं, हमारा ये ऑप्शन बन जाएगा ऑक्सीजन इज मच लेस ऑब्जर्वेंट। तो एटमॉस्फेयर में जो है वो ज्यादा होगा। और ये सारे क्वेश्चंस हमारे इससे रिलेटेड थे जो हमने अभी डिस्कस किए, दैट इज फ्रॉम द टॉपिक जियोग्राफी एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी। दिस ईयर यूपीएससी हैज चेंज द पैटर्न, और हम लोग कह सकते हैं कि नो क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से तो उन्होंने पूछा ही नहीं है, और बहुत जगहों पे क्वेश्चन उन्होंने जो है कवर करने का इस बार प्रयास किया है। आई थिंक कट ऑफ विल बी वेरी लो, बहुत ज्यादा कट ऑफ गिरने वाला है इस बार। अगेन लाइक 2023 कट ऑफ वुड बी अबाउट 70 to 75 के आसपास होना चाहिए। सो लेट अस वेट फॉर दैट। जिनका भी 70 के ऊपर है तो आई एम श्योर दे शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मीनाक्षी कितना स्कोर बना आप कैलकुलेट करना और यहाँ पे बताना। हर प्रसाद, तो लेट मी नो योर एग्जैक्ट स्कोर, और बाकी बच्चे भी जो इसको देखें तो बताएं कितना स्कोर बन रहा है, और अपने मेंस के प्रिपरेशन को पॉजिटिव होकर स्टार्ट करना है। ओके, तो दैट इज ऑल फॉर द डिस्कशन। आई थिंक सब लोगों का डिस्कशन हो चुका है सारे क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरीज regarding any question, so you may free to ask me, as well as student can connect, and आप लोग जो है इस पे कमेंट कर सकते हो, तो दैट इज द वे। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो और बी रिलैक्स, बी कूल फॉर योर रिजल्ट। अगर कट ऑफ के आसपास भी पहुंच जा रहे हैं, इसका मतलब कि 80 के आसपास है, तो यू विल क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज पर दिस पैटर्न। 80 तक का क्वेश्चन तो बहुत सेफ हो जाएगा, आई थिंक सो। तो विद दिस वर्ड आई एम एंडिंग दिस डिस्कशन। होप यू हैव एंजॉय, और मैं इसको एंड करता हूं। ठीक है, चलो तो डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। क्वेश्चन क्या मीनाक्षी बताओ, 11 का क्या कोई क्वेश्चन है क्या? 11 क्वेश्चन नंबर 11, आर यू आस्किंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 11? मेरा ओपीएससी सर जी 11, तो अच्छा ओपीएससी का मींस देना है, दिया है, तो ओपीएससी तो अच्छा ही जाएगा। यूपीएससी में इतना अच्छा आप कर रहे हो, तो ओपीएससी में तो इस लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। अभी ओपीएससी तो नवंबर में है शायद, अभी तो डेट बढ़ गया है उसका, तो अच्छे से उसको प्रिपेयर करिए ओपीएससी को, और आई विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और विद दैट वर्ड एंडिंग दिस क्लास, कंक्लूडिंग दिस क्लास। तो इस क्लास को कंक्लूड करते हैं, और बाकी जो डाउट एंड क्वेरीज हैं वो सब हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, देखते रहेंगे सबको। ठीक है, चल तो एंडिंग दिस क्लास, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।